And we are live. Hi Vani, how are you? Hi, I'm good. How are you? I'm okay. कैसे हो? क्या चल रहा है? Kushni, I just came back home. I was out for dinner with my father and I just came back home. So I'm kind of Nice. joking. कैसा था dinner? It was nice. We went to the same place where that I think most of us love. Nice, 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 nice. Yeah. How are you? How have you been? How was your day? I'm good. And आज हमें तैयब का मेरे पास श्योर नहीं है because तैयब का I think phone switched off आ रहा है. So I hope everything is okay. But I'm not sure if Tayyab is joining us. I really hope he does. And but like I think Shakti will join in sometime. Yeah. Yeah. 1 second ना. Mm-hmm. आप चैट पढ़ सकते हो तब तक. Yes, I'm just addressing those. My phone is here Yeah. and I'm trying to. Yay. Okay. Hi, Jibin. How are you? Hi, Suraj. I'm so sorry. I'm not addressing all the chats because I just opened them. Hey, oh, Jerry has finished the second book of Three Body Trilogy. Wow. Nice. Funny story. Yesterday, I slept reading the Three Body Trilogy and I had the wildest dreams. And I've Nice. made a decision that सोने से पहले Three Body नहीं पढ़ी. Yeah. But yeah. Hi, Milind. How are you? Wow. Oh, you saw Gehraiya, no? I heard your review Yeah. and it was really nice. Yeah. And when you said, I'm sorry, ये frame मैंने फिर से shoot किया, I just opened my phone and I was like, oh, that's nice. But it was a nice review. It was really nice. But Yeah. I heard the spoiler and now I'll watch it. मैंने ऐसे कोई स्पॉइलर, हाँ मतलब मैंने इतना कोई इंटेंस स्पॉइलर नहीं I दिया. I think I know what happens, like, but I'm not sure. या. नाइस नाइस But it's नाइस. nice. I know you warned everyone कि अब spoiler आ रहा है तो जाना है तो जाओ. But I was like, no, I'm the daredevil. It's also like reverse psychology, you know, like कि sometimes when you say कि आप बंद कर दो वीडियो, then the chances of them staying over increases also. कि आप बंद कर. They know But it like it's not healthy for them, but people love unhealthy things. they- yeah. Hi Suraj, hi Rahul. Watched Kingsman today despite the bad. I really okay. He said, "Oh boy, what a trash movie," but I really liked Kingsman. Kingsman is that gentleman's honor type of movie, na? If I'm not wrong. किंग्समैन में सीक्रेट एजेंट्स होते हैं बहुत सारे. Yeah, and they're all like dressed up like it's a chic Lee, if या. that's in it. Yeah, I like Kingsman a lot. I mostly because of the fashion. नाइस. Yeah, Alan just completed Succession yesterday, and he also finished Dark Forest a couple of days ago. Best peak of content ever. काफी सही dude, like this is nice. Yeah. Arpan. I have a question for Arpan. How do you feel after completing Succession and knowing that अभी जो उसका fourth season है वो भी I don't know कब आ रहा है. It's coming in October, right? किसका किसका फोर्थ सीजन? Succession का fourth season? Like it'll come in fall of 2022, right? या. Or am I dreaming a little too या. Can ज़्यादा? मैं एक सेकंड ना, शक्ति is there, I'll just message him like कि adding you in Sure. 5. Great. Hey, क्या चल रहा है guys? And what's up? Have you seen the recent video that Vaibhav did on Gehraiya? And have you guys seen Gehraiya and how do you like it? And yes, as Jibin says, do like the stream. It's very important. Is it? I think I'll just quickly change my browser and I'll switch from my phone to the laptop because मुझे number of likes बार बार refresh करने पड़ते हैं. Got it. But yeah. किस में नंबर ऑफ लाइक्स But रिफ्रेश करने पड़ते हैं? on my phone because it just gets stuck on one thing. Oh no, wait. Nobody like guys do like the stream. I'm thinking of watching Succession. Yes, Rahul, that will be the best decision you make in the month of Feb.
Yeah, Ashish Gunawat is here in chats. He is a friend from Jaipur. He's also helping me with a lot of Chalchitra Yeah. related things. I'm making him the moderator. तो आशीष मैं आपको moderator बना रहा हूँ. I just made you the moderator. Yeah. So yeah, Hmm. and so yeah, man. End of people are watching Succession. They are like reading Dark Forest. It's very nice. In fact, like I have to say, the third part of uh Three Body Problem is also unlike I've ever and anything I've ever like witnessed in my life. It's beyond like anything I had ever imagined. क्योंकि वो हर में इतना वन अप किया and like one thing you need to realize while reading Three Body Problem is it is not about the characters. It's about आप characters से ज़्यादा लगाव भी कर लोगे it doesn't matter क्योंकि एक बहुत बड़े स्केल पे बातें चल रही हैं. तो जब इतने बड़े स्केल पे बातें होती हैं तो हर जना बहुत ही इनकॉन्सिक्वेंशियल होता है. So just keep that part in mind कि uh, how eventually things can be very very inconsequential, and like I'm really liking that part about Three Body Problem also. The third part, Death's End is very good. I am 20% in, and आज मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया. I read this book today, The Joy of Living. ये एक बुद्धिस्ट monk की meditations का collection है. I had picked it up last year like 6-7 months back, and आज मेरे को ऐसे किंडल पे कुछ पढ़ने का मन हो रहा था, कुछ नया. लाइक आई हैव बीन रीडिंग लीडर्स ईट लास्ट. बाय द वे, थैंक यू फॉर द अमेजिंग रिकमेंडेशन, वानी. लाइक इट्स अ ग्रेट ग्रेट बुक. बहुत अच्छी बुक है. लाइक every now and then Vani recommends something which is great. By the way, my friend Shreya also recommended something to me yesterday. Yeah. So she also recommends something which is always very good. And like I was walking with her, and like I remember on one of the walks, I gave her a monologue last time, and she's like, you know what, you should pick up this author called Italo Calvino and read Cosmic Comics, and it was life changing. Yesterday, she recommended me this book called The Course of Love. Have you heard of it? The Codes of Love? The Course of Love. Course. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. It's Ellen the Bottom, right? The Course of Love is Alan de Botton's. Oh, Yeah. nice. Yeah. I So I'm not sure. Now I think I could be wrong, but yeah, I've heard of the book. Yeah. नाइस. तो कोर्स ऑफ लव उन्होंने रेकमेंड की, तो देखते हैं. बट यस आई एम अभी मैं कुछ टाइम पहले से आर्काइवल इंटरव्यूज देख रहा था सारे सेलिब्रिटीज़ के, जो भी बहुत बड़े बड़े Hmm. सेलेब्स हैं दुनिया में, उनके Yeah. आर्काइवल इंटरव्यूज देख रहा था. एंड इन अ मिनट आई ऑल्सो बी एडिंग शक्ति टू आवर लाइक सेशन. इट्स बीन अ वाइल. बट लाइक वानी, यू टेल अस व्हाट यू हैव बीन वॉचिंग एंड लिसनिंग टू. Uh, okay. I have a small rant because I saw this video by a famous booktuber वो ऐसे ही feed में आ गया आज, and the person was reviewing books by a certain celebrity and he trashed them like crazy. Now I think I am no longer an admirer. आई होप लाइक स्ट्रीम में चला क्या. Not yet. I'll just comment now. Okay, no wait. I think We're chal back. gaya. Yeah. So sorry for the disturbance, guys. I don't know why this happened, but now I think the internet is better. And without much ado, or without further ado, let's also have, I think both are correct. Yeah. yeah, without further ado, let's also have Mr. Shakti Shetty with us. I think we are streaming with Shakti after a long time. एंड Yeah. बहुत टाइम के बाद, आई थिंक मतलब महीने हो गए, 6 महीने से ज़्यादा हो गए बिफोर सिंस वी डिड आवर लास्ट टाइम. काफी टाइम हो गया एक्चुअली. क्या कैसे हो है शक्ति? अभी भी अंधेरा ही अंधेरा है आपके मैं बैकग्राउंड में. हाँ, ये लाइफ में भी अंधेरा ही है. क्या हो गया यार Hi ऐसे Shakti, मतलब. how are you? हाय वानी. कैसे हो शक्ति? व्हाट हैव यू बीन अप टू? अंधेरा क्यों है लाइफ में? नहीं, आई वाज जस्ट किडिंग. भाई योर बैकग्राउंड इज ऑसम. लाइक सही है, बहुत सही लग रहा है ये योर बैकग्राउंड. मतलब हम दोनों खुश हो जाते हैं, तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक. मी. नहीं, आई वाज रेफरिंग टू वैभव, बट या वानी का इज फार बेटर, बट या. हाँ, नाइस सेव, वेरी नाइस सेव.
कैसे हो यार? Like it's What I all got, I'm good. Same story. I had COVID for the first time 2 weeks ago. okay. So Really? yeah. So I stayed safe all through pandemic. And suddenly, I got COVID and finally realized कि यार ये थोड़ा difficult है. अब Yeah. तक हाँ सिर्फ दूसरों का सुना था ना. हाँ So yeah, that has been the other thing is I finally learned how to drive. I'm still learning actually. How So to drive? drive, yeah. I never learned like I was interested, but this is the first time I actually got into it and I passed my driving test and everything. So ये दो चीजें हुई है since the last time we spoke. Yeah. नाइस. माइक I ठीक have हो a गया very आपका? bad story. यूज कर रहे हैं हम. वानी वानी अपना माइक दिखाओ. Vani has a black Hi. one. Hello. Hello, hello. Hey, Vani was saying something. We interrupted her, I think. Yeah. Vani has a driving story. I have a very bad story about my driver's test. I failed it, but like how I failed it is like even This worse. happened in what, Chandigarh or what? It happened in Himachal, and I was supposed I almost passed my driver's test, and he just asked me to come over and write my name, and I kind of drove the thing on his foot. अरे यार. So Oh I shit, dude. so I never got my driver's license. I that's when Pass. I realized कि यार इसमें वो difficult है. Like I thought it would be easy, and after that, after seeing all those other people doing all those gimmicks, because whatever you learn and you go there and they ask you to reverse and do वो the 8 बनाना eight होता है. eight बनाना होता है reverse में and all that. And that's when अरे यार ये तो बहुत difficult है. हाँ. So I don't know how I passed, but yeah, I passed, which is not good news for pedestrians. But yeah, so बट यही है developments. How are things with you guys? बढ़िया है. लाइक हम हमारा सिंपल सा वो है कि यार जिसके साथ बहुत टाइम से फोन पे बात नहीं हुई या किसी को कॉल बैक करना है, अरे यार तू स्ट्रीम पे आ जा. तो ये एक बहुत सही वो बनाया हुआ है. मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी इतने दिनों से उससे बात नहीं हुई थी, एंड लाइक हम दोनों एक दूसरे की कॉल मिस कर रहे थे. यार तू शाम को फ्राइडे को स्ट्रीम कर, स्ट्रीम पे आ जा. कॉल बैक अभी तक नहीं किया लेकिन मैंने उसको, हमने स्ट्रीम कर लिया लेकिन. But it's a nice way to chill यार, to connect and Yeah, people like watching us. Like अभी भी 87 people are watching us. जल्दी से stream like कर दो and tell us yeah. my favorite streaming like question. कहाँ से देख रहे हो हमें chats में बताओ. अरे आप शक्ति आपने किया, ये इतनी फील आती है पूछने से. अरे कहाँ से देख रहे हो? आपको पता है असम में इतनी ऑडियंस है हमारी. हम तो उसी में असम Ah. और नेपाल में बहुत ऑडियंस है हमारी. तो या गाइस डू टेल अस आप कहाँ से देख रहे हो, एंड वील रीड आउट एवरी लाइक हम सारे ऐसे पार्ट्स में सब 33% पढ़ेंगे. लाइक वन थर्ड पढ़ेंगे. एंड ओके, सो सूरज इज वॉचिंग फ्रॉम पुणे. पुणे में भी बहुत ऑडियंस है. श्वेता इज वॉचिंग फ्रॉम पालमपुर, पूर्वी इंदौर, इंट मी बट मी हैदराबाद, एंड Nice. सक्षम इलाहाबाद, प्रीति मुंबई, मितेश भुज, शौर्य दार्जिलिंग. शौर्य भाई हमारे पेट्रन है दार्जिलिंग में. दार्जिलिंग मीटअप करते हैं यार, दार्जिलिंग जाना है मेरे को. आप गए हो क्या शक्ति दार्जिलिंग? नहीं. चलते हैं दार्जिलिंग का कुछ सेटअप कराते हैं, इनको दार्जिलिंग आ रहे हैं. मिडिल एक इज हैदराबाद, समराज एस, संज इज बैंगलोर, अमन वर्मा जयपुर, अर्पण मुंबई, राहुल मध्य प्रदेश, निखिल फ्रॉम कानपुर, सिंदूर वर्मा हैदराबाद. सिंदूर हमारे वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट पेट्रन है. थैंक यू सो मच सिंदूर. ही ऑल्सो गॉट अ ईयरली मेंबरशिप रिसेंटली. अनुज इज वॉचिंग फ्रॉम दिल्ली, पिंटू कोलकाता, यश रांची, विराज पुणे. पुणे से और लोग आए गाइस, तो आप लोगों की हम मैच मेकिंग भी करा देते हैं, तो आप लोग जाके कनेक्ट करिए. यश नेपाल, यश इज वॉचिंग फ्रॉम नेपाल. सुजय औरंगाबाद, सम्यक अकोला, देबश्री ओडिशा, हर्ष हरियाणा, नरेंद्र बैंगलोर, साई पटना, मधुमिता दिल्ली, दिनेश चेन्नई. यार मैंने 33 से ज़्यादा पढ़ दिए. आप देखो ना, आपको जो दिख रहा है शक्ति, आप भी पढ़ो. आपकी स्ट्रीमिंग काफ़ी फील आएगी, देखो पढ़ो. तुमने लास्ट कौन सा नाम पढ़ा था? मैंने पढ़ा था ये फरीदाबाद से पहले वाला, हर्ष 2421 से पढ़ने हैं हमें. हर्ष वो टू मैं बहुत नीचे आ गया था एक्चुअली. आप उल्टा कर लो यार. हाँ तो मैं नीचे से पढ़ता हूँ. हाँ. पिंटू बिस्वास कोलकाता, अनुज गुप्ता दिल्ली,
uh, नत्सु अग्रवाल यूपी लिखा है उसने. सिंदूर वर्मा हैदराबाद, निखिल मिश्रा. ये हो गए, ये अरे हो आई नो गए. निखिल, हाँ. आई नो निखिल अरे मिश्रा. नाइस. हाँ, इज फ्रॉम आप कानपुर. ऊपर जा रहे हो ना, अब यहाँ से नीचे ही जाना है बेसिकली. यहाँ के इसके नीचे के नहीं पढ़े मैंने. अच्छा. तो हैव यू रेड अर्पण राहुल फ्रॉम मध्य प्रदेश? नो. नहीं ना. अर्पण मैत्रा फ्रॉम मुंबई, अमन वर्मा फ्रॉम जयपुर, Sanj, which could be a short form for Sanjay, I think, from Bangalore. Someone named Middle C from Hyderabad, Shaurya Pathak from Darjeeling. या. तो अपने उस दार्जिलिंग के दो लोग थे क्या? मैं इससे पहले भी किसका तो नहीं नहीं नाम नहीं, सुना हम था. एक्चुअली उल्टा पढ़ रहे हैं. अब लाइक अच्छा. अब हम देंगे, लाइक वील हैंड ओवर द रेंज टू वानी. वानी आगे के बढ़. देखो इससे क्या हो रहा है, एंगेजमेंट बढ़ गया. देखो 100 से ज्यादा लोग आ गए एकदम से. तो वानी, यू टेक द लीड नाउ. Okay, I'll start from. I'm completely lost. हम कहाँ पे पढ़ रहे थे? So I'll start from जहाँ पर you'd left. फरीदाबाद. हाँ. Harsh 2421 Faridabad. So Jit has retracted his message. So Ashish from Jaipur. Hey Jaipur, nice. Mitali from Abu Dhabi. K Vikas Hyderabad. Saurabh Palia. I hope I pronounced that right. Palia also it can be. Sujit West Bengal. Devashree Bhubneshwar. Pintu Kolkata. अभिषेक नेपाल, कुशाल कैलकटा. नाइस. कैलकटा से भी बहुत लोग हैं. या. देबाश्री फ्रॉम भुवनेश्वर, सौरभ दिल्ली, चिराग गुड़गांव, हर्ष अगेन फरीदाबाद. Jibin is from Kerala and he's asking if is there nobody else from Kerala except me. Uran from Pyongyang. Oh, nice. Plan B, Bhutan. Natsu is from नाइस. Wuhan. Harsh again. Harsh has commented a lot many times. हर बार Tafsir अलग is अलग from सिटी बोल रहे हैं क्या? नहीं, Faridabad. He's from Faridabad. हाँ. Nandan is from Nashik. And Saurabh is from Balia, UP. Oh. Hey, Anandita is also in the comments. And Kanan is Anandita, from has she Bhojpur. come back to India? She's a patron. She's in Vishakhapatnam right now. Hey, nice. When Yeah. did you come back? I mean, I think the last time we spoke with her, she was in India. Yeah. But yeah, Himanshu is from Marsh, Shyam, Calcutta, Parzek, Scranton. Yeah. Scranton is actually a place of what? I thought it was. ये तो Yeah. डंडर मिशलन जोक था मेरे को तो. हाँ वही डंडा मिशन. Yeah. Prasoon, Manipur, Abhivarma, Noida, Sujay. Okay. No Yeah. internet in Oh, North Korea. Kunal, nice I thought one. it's also in South Korea. कुणाल ने कुछ बोला है जो 3 बॉडी प्रॉब्लम I- पढ़ेंगे दे वुड नो इट. नाइस. तो मैं बोलूंगा got नहीं. संदीप इज फ्रॉम बैंगलोर. संदीप रिसेंटली बिकेम अ पेट्रन अगेन, सो नाइस टू हैव यू संदीप. वंश सिलीगुड़ी. हो गई यार, अब बहुत पढ़ लिया. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. शक्ति कैसा लगा? फील लाइक स्ट्रीमिंग, फील लाइक धीरे धीरे वार्म अप कर रहे हो अभी. क्या आपकी क्या You're ऑब्जर्वेशन joining रही? us. क्या ऑब्जर्वेशन रही? कहाँ से सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं या कहाँ से नहीं देख रहे? I think it's quite pan India, no? है ना, काफी पैन इंडिया ना. Yeah, it's like कश्मीर no से नहीं, मेरे को favorite. कोई नाम नहीं दिखा, लेकिन नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट. Guys, do like the stream, by the way. हाँ. अरे हाँ, I was asking about Tayyab. Tayyab? Does he? Yeah, I wanted him to join, but उसका वो डबल टिक आ गया. Are you joining? आप क्या पूछ रहे थे तैयब के बारे में? Yeah, I just wanted to ask whether he's joining or not. Yeah, but I think he might not be able to join. मेरे को अभी अच्छा. मैं श्योर नहीं हूँ. तो yeah. Mm-hmm. Shakti back after a long time. I miss Shakti's philosophical बातें from last year, so I keep rewatching it. अरे क्या बात है नंदन Nice. भाई. मैं पता है क्या सोच रहा था. मेरा ऐसे मेरे को अभी आधे घंटे पहले ही आइडिया आया था. शक्ति, आप मतलब डांट भी सकते हो अगर आइडिया पसंद नहीं आया ना, तो मतलब टोटली ओके. Also, मैं हाँ yeah. नहीं मतलब I हम don't तो know बकचोदी why. करने के मूड में. But हम शक्ति का यूट्यूब चैनल खोलते हैं और शक्ति के वीडियोस देखते हैं और फिर उन पे ना एनालिसिस करते हैं, रिएक्टिंग टू शक्ति's वीडियो विद शक्ति. कि कोई उन्होंने फंडा बोला और उसके ऊपर बात कर रहे हैं सारे. Actually, you won't believe this, but I stopped uploading in October, I think. October and November. Why? I just stopped it. I thought like, यार ये बहुत tiring है and I should stick to writing. So I just stopped.
I started in March, right? हाँ So March or April I started. So barely 6-7 months I was regular. गाइज आज का Post मिशन मिल गया है, हैशटैग रिवाइव शक्तिज यूट्यूब। ठीक है, तो मतलब बकवास। बिल्कुल चालू कर दो, मतलब स्पैम कर दो शक्ति को हर जगह, इंस्टा ट्विटर, और अभी सबसे पहले इस चैट में हैशटैग शक्तिज यूट्यूब। ठीक है, चालू करते हैं। आ, क्यों, मतलब नहीं, ये तो बहुत सैड है यार, ऐसा मत करो। It हाँ actually the thing is, यार, when I look at other people's video and all, ना, I realize कि यार they put in a lot of effort. They not only put in uh, an effort on like on हम the क्या, content side, but हमें also देखो the यार, कहाँ editing. एटलेस खेल रहे, कहाँ एफर्ट है। नहीं यार, तुम लोग भी मेहनत करते हो, ऐसा नहीं क्या यार, like all those mash videos that you do where you हाँ pull out stuff and तो मेहनत तो होता है वहाँ एडिटिंग वगैरह। मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं, मतलब I just used to rant for 2 minutes max or 3 minutes max and that's it, post कर दिया, which I feel is not a very educated way of doing YouTube. तो मुझे लगा यार ये रहने दो इसको, I should do what I'm much more efficient at। तो उसके बाद I moved back to blogging and all those things। तो ये आइडिया है, बट आई गेट योर सेंटिमेंट। नहीं नहीं, अब तो मतलब दिल पे ले ली मैंने बात, अब तो चालू करवाना है। एक यूट्यूबर टू और अदर यूट्यूबर चालू करवाना है। करे क्या, आपका कोई वीडियो देखे क्या? क्योंकि मेरे को पता है, मैं तो आपका फैन ही, पता है, लाइक व्हेन आई फर्स्ट मेट शक्ति ना, मैं इनका ट्विटर देख के पहुंच गया। गुड़गांव में था हाँ मैं शायद, यही कम गुड़गांव में ही मिले थे ना हम, लाइक कि मेरे को आपसे मिलना है। एंड लाइक तब मैं ही आई लंच ब्रेक में मैं इनसे मिलने गया था, एंड लाइक सिंस देन वी हैव बीन टॉकिंग ऑन एंड ऑफ, एंड आई रियली लाइक दैट थिंग अबाउट योर यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो। तो मतलब वो ये, मैंने भी पहले 1.5 साल चलचित्र के, आप न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट सॉर्ट करोगे तो पहले एटलीस्ट 60-70 वीडियोस में नो थंबनेल नथिंग, एक जगह बैठे कुछ और नहीं। बात कर रहे हो। हाँ एंड बट लाइक आई वुड रियली, शक्ति का यूट्यूब चैनल मॉडरेटर ने डाल दिया है, अब ये खोलते हैं यार शक्ति, प्लीज यार, ठीक है, अलाव अस। करते हैं, चलो। चलो लेट्स डू दिस, हाँ ठीक है। यार, मैं इसका क्या सेट, करना है हाँ, बताओ। मैं, एक सेकंड दीजिए मेरे को, मैं इसको हम्म, यहाँ मूव कर लेता हूँ। और गाइज सब्सक्राइब भी कर लो सब शक्ति का जल्दी से यूट्यूब चैनल। शक्ति 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 शक्ति, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? यार मैं थोड़ा ना कंफ्यूज हो गया, 1 सेकंड, वेट इज इट, वो जीनियस, सॉरी, आई गॉट, या, चलो, स्क्रीन शेयर, बैक टू मीटिंग। कौन सा वीडियो देख रहे हैं हम लोग? हम, आप जो बोलोगे वो देखेंगे, ठीक है। Yep. हाउ अबाउट टी शर्ट्स विद माई नहीं, कोच, वो बकवास है, वो उसको रहने दो। समथिंग ऑन होलसम मैंगलोरियंस। वो, हाँ वो अच्छा है एक्चुअली, आई लाइक मैग्लोरियन पीपल, सो ठीक है, इस पे ये देखते हैं। मैं देख लेता हूँ आप लोगों को ऑडियो सुनाई दे रहा है या नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ, 1 सेकंड ना, शेयर साउंड, चलो गैस। ये क्या I stayed in also Gurgaon for almost 6 years. And last year we moved to Mangalore. So actually tomorrow we'll be completing a year in this new city for us. And I I can vouch for the people here. I can tell you that these are some of the most wholesome people, and I'm pretty sure like this is the case in most of the tier 3 cities, if not tier 2, because the urban reality hasn't like subsumed the rural fabric, so to speak, and that is very much evident here. Like Mangaloreans, especially those who live on a bit away from the main parts of the city, they are ridiculously helpful. Like there's something else only. I've already mentioned it before in a video that how they'll give you random discount, and they're always like on the lookout to help, and
I've already said that before. But in this example, I'll highlight how if you go to a phone shop and you ask for iPhone 12, they'll suggest iPhone 11. Mhm. Rather insist that iPhone 11 is a far better phone than iPhone 12, which is unheard of. Like of all the cities that I've lived in so far, like I haven't come across such people. That shows that they prioritize personal relationship over commercial interest. Uh, and it has happened again and again, not just in a phone shop, but also with fruit vendors, fishmongers. It's amazing. Like it's something else altogether. So and this is coming from a person who has grown up in Bombay. Like I spent my entire life uh, telling that Mumbaikars are the best. Like you won't find more helpful people in the country. But after staying in Bangalore, I can deviate a bit and say that maybe this is how things are in tier 3 cities. There is some semblance of righteousness, of humanity, genuinely caring for someone else, without any interest, without any uh, commercial interest. And so yeah, so this is it. Like although most of the past 1 year has been spent in isolation, but let's see like how many more years are to be reckoned here. Nice. The first time I'm seeing the video, by the way, I think. यार अच्छा था यार, ये तो मेरे को तो पसंद आया. मैं तो ऐसे रैंडम कोई भी टॉपिक बोल रहा हूँ. Like this is still positive. Most of the videos are very rantful. Like I'm constantly ranting. ये बुरा है, वो बुरा है, humanity sucks and all that. So I'm kind of surprised to look at the very positive, heartwarming. नहीं यार, अब तो आपका ये रिवाइव करा के रहेंगे. आपको बस इसमें इंट्रो आउट्रो डालना है और कुछ नहीं करना. सब्सक्राइब की एक स्लेट डालनी है और एक स्टार्टिंग में कुछ शक्ति शेट्टी का वो डालना है. बाकी तो सही है. देखते हैं. बट नाइस यार. वानी, व्हाट डिड यू थिंक? I really liked it. अरे यार. So the thing is like, so when I look at the people I follow, right, the people like Nerd and all these people, and I see like they orchestrate everything. They put in a lot of time and a lot of thoughts into it, right? कि मतलब ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, और I just go, I like लैपटॉप खोला और सामने बैठा और पहला जो भी सोच आया, you just say and you upload. That's it. And I feel that is a bit. नहीं बट शक्ति, नहीं, इट्स नथिंग रॉन्ग देयर. मैंने आज गहराइयाँ देखी एंड विद इन हाफ एन आवर आई मेड अ वीडियो ऑन गहराइयाँ. आई डिड नॉट स्क्रिप्ट वन वर्ड. And this is how I have been running the channel for, like, it started on 10th October 2018, Chalchitra Talks. और तब idea ये था कि I'll watch stuff, I'll write the keywords कि इसके बारे में बात करनी है, but वो भी मैं rarely करता हूँ. But sometimes मेरे को पता है कि कैमरा चालू करेंगे तो मेरा flow निकल जाएगा, right? But like हाँ, हम cuts डालते हैं, like we try to cut the जहाँ पे मैं पॉजेस लंबे ले रहा हूँ या जैसे भी है, बट फ्लो बेटर होता जाता है धीरे धीरे आप जीते. इसलिए लाइव स्ट्रीम्स ऑल्सो हेल्प्स अस अ लॉट कि वी नो व्हाट टू से, व्हेन टू से. हमें पता है ड्रॉप कब आएगा, मतलब मोटा मोटा पता है कि कब क्या बोलेंगे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा. बट टिल डेट आई डोंट स्क्रिप्ट माई वीडियोज. अ लॉट ऑफ पीपल डू. कुछ लोग टेलीप्रॉम्प्टर भी यूज़ करते हैं, जो लोग मतलब पीपल डू इट इन ऑल देयर वेज. लोग वीओज के साथ करते हैं, वो एक एक फ्रेम डिसाइड करते हैं. बट लाइक टू ईच इज ओन है यहाँ पे. इट डजेंट मैटर. अगर नर्ड राइटर कर रहा है तो ठीक है यार, वो नर्ड राइटर का स्टाइल है. एंड इट डजेंट मीन कि आई केयर अबाउट द मीडियम लेसर. वो मैं मेरे डिफरेंट फॉर्मेट वाले वीडियो में डालूंगा. बट मैंने तो सीरीज भी इसलिए चालू किया कॉल्ड थॉट्स एंड रिकोस, कि जैसे आप कर रहे हो मैं लेजिट वैसे आके बात करता हूँ कि यार जैसे मेरा एक थॉट्स एंड रिकोस में एक आइडिया है कि द मूवीज जहाँ पे लोगों को ये लग रहा है कि मतलब उनको घर जाने का मन हो रहा है, जहाँ पे कोई कैरेक्टर कह रहा है मुझे घर जाना है,
या आई वॉन्ट टू गो होम। ये हॉलीवुड मूवीज में डायलॉग बहुत प्रेवलेंट है और बॉलीवुड मूवीज में। ये राजी में आलिया भट्ट बोलती है आई वॉन्ट टू गो होम। डोंट लुक अप देखोगे तो उसमें लियोनार्डो डी कैप्रियो बोलता है आई वॉन्ट टू गो होम। एंड द आइडिया कि जब आप एडल्टिंग इतनी कर रहे होते हो और आपको रोना आ जाता है कि मेरे को बस घर जाने दो, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। आई वोंट स्क्रिप्ट इट, क्योंकि मेरे को पता है मैं तब इतना अच्छा बोलूंगा बिकॉज आई हैव डन दिस, आई हैव बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग। अभी भी आप देख लो, लाइक आवर चैनल इज नॉट द मोस्ट सक्सेसफुल चैनल आउट देयर, वी स्टिल गेट लाइक वेरी डिसेंट नंबर्स ओनली, बट ये चीज मजा आता है। एंड इट्स नॉट टू डिसरिस्पेक्ट द मीडियम, दिस इज व्हाट इज आवर किक, राइट? जस्ट बीइंग इम्प्रॉम्प्टू एंड डूइंग इट समटाइम्स, इट्स वेरी थेरेप्यूटिक। मतलब मैं एग्जैक्ट सेम तरीके से बनाता हूँ, तो मैं आई कैन वाउच फॉर दिस स्टाइल ऑफ मेकिंग वीडियोज एंड आई कैन डू द अदर थिंग ऑल्सो। बाय प्रोफेशन आई डू दैट, लाइक लेजिट आई डू दैट, बट द रीजन वाई वी डू दिस इज कि ठीक है यार, मजा आता है। गहराइयाँ अगर मेरे को बैठ के वर्ड डॉक खोल के 2000 वर्ड का पहले आर्टिकल लिखना, मेरे को करना ही नहीं है वो। हाँ एक्चुअली यार टाइम मैनेजमेंट भी है यार, so many things are there actually few yeah but yeah like you said ना, to each their own। अगर something works for you just Yeah, do that। अगर yeah, नहीं काम कर रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं टाइप्स। yeah. बढ़िया। How much do you script your videos, Vani? Mm. I note down pointers and I just organize like एक flow कैसे बनेगा. हाँ, Otherwise, I do not like. There used to be a time when I started doing it, I would write down each and every word. But I've realized over the past few months that when I stand and then I shoot, it really helps me better. And nice. I'm just trying to incorporate that now. या इनफैक्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरी रिकमेंडेशंस का एक प्रिंट आउट लिया था, क्योंकि मैंने एक बेस्ट ऑफ चालू किया, क्योंकि मैं मूवीज़ देख रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, प्रोडक्ट्स देख रहा हूँ। तो मैंने बस हर चीज़ का एक एक नाम लिख लिया। मूवी में मैं ये रिकमेंड करूँगा, डॉक्यूमेंट्री में ये करूँगा, ये करूँगा, बट द फ्लो इज स्टिल like very different in like every video that I do। जैसे मैं वीडियो के दौरान हमेशा एक हैशटैग देता हूँ ऑडियंस को, मैं मतलब लाइक लिटिल ट्रिक्स बता रहा हूँ जो मैंने अभी तक डिट्यूस किए हैं, जो मेरे नॉर्मल अपलोड वीडियोस होते हैं। तो जैसे मेरे लास्ट वीडियो में एक हैशटैग था कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा, सो यूज द हैशटैग day1 एंड टेल मी अबाउट द डे यू डिस्कवर्ड चलचित्र टॉक्स एंड विच इज़ योर फेवरेट वीडियो। अब जैसा इस वीडियो का हैशटैग है रिवाइव शक्तिज यूट्यूब। It's just that ki people really also like to be a part of the community in that way. They also feel respected कि हाँ यार कि आप हमसे वो बातें कर रहे हो। Like I can legit have this call with you, like conversation with you over a call also. But अगर हम उनके सामने बैठ के ये बात कर रहे हैं तो वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं, right? And then you give them the right call to action कि यार हमारी नई वेबसाइट आई है, वो जाके देखो, या शक्ति का यूट्यूब चैनल जाके देखो। इफ डन राइट ना, इट रियली हेल्प्स एंड द पीपल नो कि कौन लोग स्क्रिप्ट कर रहे हैं अपने वीडियोस, कौन नहीं कर रहे हैं। कुछ फॉर्मेट्स में हम करते हैं, कुछ में नहीं करते, बट दे आर ऑल्सो हेयर फॉर द वल्नरेबिलिटी, दे आर ऑल्सो हेयर फॉर द times when you let's say fuck up, and they will be okay with it, most of them जो आपके like literal like hardcore fans हैं। एंड वैसे ही मेरे को लगता है कम्युनिटी ग्रो हो रही है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट मैंने अभी तक जो डिड्यूस किया। That's a very humane way of looking at things actually। कि मतलब यार you build a relationship with your audience in such a manner कि they forgive you for your errors because they become part of your whole vibe, right? So that I think I've told you about this earlier, maybe I don't remember, like what I really admire about the superstars, right, be it in any field, be it Roger Federer in tennis or Lionel Messi in football or Shah Rukh Khan or Salman Khan in cinema, people love them so much कि they don't care whether they fuck up। कि तुम जाते हो और Roger Federer is having a bad day on court, it's perfectly fine because तुम्हारा प्यार कम नहीं हुआ उनके। Yeah. And the same is true for Salman Khan, right? Like Yeah. people go because they love their bhai and they have that connect with them, right? So obviously we are talking about a very different scale altogether, but उसका जो फाउंडेशन है सेम है। हाँ, ये हमारे लिए भी ट्रू है, क्योंकि आज की डेट में सब कुछ डेमोक्रेटाइज हो गया है।
Yeah. एंड That लाइक makes complete sense. या जैसे यहाँ पे एक्सपेरिमेंटेशन की बात होती है, मैंने इंस्टा पे चलचित्र से एक पोस्ट डाली थी अभी कि सक्सेशन इंडिया में कौन सी कास्ट होनी चाहिए जब सक्सेशन का इंडिया में, उस पर बहुत गालियाँ आई, बहुत गालियाँ, एंड आई गॉट सो स्केयर्ड पीपल विल लाइक नॉट लाइक चलचित्र और ये वो, क्योंकि मैंने एक दो नाम लिखे थे जिस पर लोगों को लगा ये तो अच्छे नहीं है, तुमने कास्टिंग अच्छी नहीं की, एंड देन यू पुट अनदर पोस्ट एंड दे विल बी लाइक हे वी स्टिल लव यू। वो शायद उस पे That's how it गुस्सा is. दिखा देंगे, वो चाहे उस पे दिखा देंगे कि हे दिस इज नॉट राइट वगैरह, एंड not trying to say that we are uncancelable, just Everybody is cancelable. I don't think so, not everyone. सब cancelable नहीं होते लक्ष्मण। guys हमें comments में बताइए who do you think is uncancelable? या क्योंकि मैंने ना एक बहुत अच्छी एक थ्योरी पढ़ी थी, कैंसलेबल क्या होता है, आज के डेट में कोई कैंसिल होता है ना, कैंसलेशन इज इक्वल्स टू यू लूजिंग 10% ऑफ योर ऑडियंस, द रेस्ट ऑफ देम विल स्टिल स्टे देयर। कैंसलेशन में सिर्फ आपकी 10% ऑडियंस आपको छोड़ के चली जाएगी। ये जो रोगन वाले में भी अभी होगा, जब भी कोई बहुत मेजर इवेंट होता है ना, this is what cancellation is like. जब I'm not talking about the sexual allegations वाला जो है, like, but I'm just talking about someone putting their content out there and saying things. Mostly होता है cancellation में आप अपनी 10% audience lose कर लेते हो। अगर 10 लाख सब्सक्राइबर है, 1 लाख चले जाएंगे, right? Something like that. But the 9 lakh will still stay there. तो लोग थोड़े political answers दे। A.R. रहमान is uncancelable. Jivan PK is saying. Dave Chappelle, he's saying. थोड़े और पॉलिटिकल नाम आ रहे हैं जो मैं बोलना नहीं चाहूंगा। Actually, Dave Chappelle was not cancelled, but he got a lot of shit for his द ट्रांस वाला joke. जोक जो था नेटफ्लिक्स पे। या अभिनव That was अभिनव इज सेइंग टी सीरीज इज अनकैंसलेबल। या I feel oldies like the established oldies like Gulzar Saab and all, they are like, I feel they are above the whole parade. You can't, but then they are not on social media, so या it puts them less at risk. Like अभी Trevor Noah का बहुत से old tweets they are picking out and या calling him racist and insensitive and misogynist, right? तो होने को कुछ भी हो सकता है. they are Yeah, cancelled. Rahul. Yeah, dead people also get cancelled all the time. Yeah, dead people. I find that very funny कि मतलब यार you're canceling Michael Jackson and I'm like he's already moonwalking in wherever he is, right? On the So, moon, yeah. yeah, wherever. And you are like canceling. And interestingly, his account is still running on Twitter. His account is still running. It's been more than 10 years since he died, but somebody from his estate is still running the account. Yeah. So that is it. Somebody mentioned Rahul Dravid. I feel Dravid is Yeah. has to be Rahul Dravid. I think Rahul Dravid is uncancelable. Yeah. I think. Vaani, give us one name. Whom do you think is uncancelable? Vaani is stuck. No, I was No, just. she's thinking. तो आप कंटिन्यू करो गाइस, 1 सेकंड में आया मैं। या Yeah. Awkward silence. I had said I started out as a very, I said Kaju Barfi is uncancelable, but no, I think you're right. The people who are established, like Amitabh Bachchan, is uncancelable. Yeah, because they reach that stage, right? That things don't matter anymore for them. I think when they, Yeah. with all due respect, when people die, it's easier to cancel them. Yeah. Then because it's that's the whole point, na? कि मतलब यार we reach that stage now where people die and even on the day they die, right? There will be Yeah. some section of the social media which will be like, Which oh will be yeah, like, oh, that person did this. this and that. And I'm What will thinking, you "Arey, achieve by canceling Roald Dahl? Yeah. He's been dead for years now. exactly. So how does it matter, right? No? So Right. Yeah. I feel it's just a fad where you have to pull down people so that you feel kind of you're better than the other person or at least somewhere closer to that person. So वो You just है, need to make a statement. yeah, some ऐसा social statement करना है कि Yeah. so I think it's a behavioral change. I think. But I find it very funny that kids who stay at their parents' place and basically are surviving on their parents' money and they go around making fun or whatever, like they criticize very overtly on social media. And I think yeah, we are, until a point where you are like not sustainable financially at least,
I feel you owe it to people you're basically leeching on. Right? Otherwise, what is there? So, to answer the question, obviously nobody is like beyond reproach or nobody is beyond criticism. But yeah, there will be some line you'll have to draw for yourself. Okay, we are all frails. We are all going to make mistakes. We are all going to suffer. We are all going to get better. No? It's Yeah. also like there comes a time like I might have made some statements 2 years ago which I know are incorrect now in Exactly. hindsight. Yeah. But you learn as you grow older. But I think what Yeah. has started happening because of everybody becoming very woke is Mm. that people have stopped forgiving people and people don't even like what we know today was like we are very woke in terms of like okay this is equality etc etc. 200 years ago that was something that was not a societal norm and Exactly. therefore judging them by standards of today is very Yeah. wrong. Very immature because uh, where are you going to draw the like I said, where are you going to draw the line? Right now, we look down upon on people who are they don't even have to be racist. Even if you crack a racist joke, you are a racist now. Back then, the Right. standards were very different. For you to be racist, is you have to believe in the supremacy of your skin color, right? Abhi, you don't have to do that. If I crack a racist joke, then I'm already a racist. तो अभी जो बाहर है बहुत लो है ठीक है so things are very different from how things of 50 years ago. So I think we are going to constantly move towards unattainable standards. कि यार maybe 50 years down the line we will look down on people who were enjoying chicken. I'm just giving a bad example, but the point is कि हम जाएंगे और बोलेंगे अरे यार 50 साल पहले तो ओबामा तो यार अच्छा प्रेसिडेंट नहीं because he was a meat eater. Something like that. Yeah. It will just get like cancel Vaibhav because he doesn't like tamasha. Like Exactly, something like that. Yeah. No, you never know कि मतलब यार क्योंकि we are constantly seeing ना कि मतलब यार हमारे इर्द गिर्द में चीजें इतनी जल्दी बदलती है तो कितना ही टाइम लगेगा कि यार वो लेवल के स्टैंडर्ड्स आ जाए कि कोई किसी चीज को पसंद नहीं करता था इसीलिए इज अ टेरिबल पर्सन उसको मोनालिसा पसंद नहीं है तो इज अ टेरिबल पर्सन कुछ भी हो सकता है ना यू नेवर नो Yeah. तो ये रुकने वाला नहीं है I just think like we have democracy in terms of political standing, etc. But slowly in the sphere of art and our choices also, dictatorship has started taking place. Like everyone is telling you what to like. Oh, What you to like like. that? You're a Yeah. terrible human being. Yeah. Oh, you cannot sit in that lighting because that's what XYZ type of people do. And that's just a very wrong way, I think. Yeah. And Because it's not yeah. Please continue. democracy no longer exists. It's just dictatorship is slowly taking over. Yeah. This And people small don't even pockets of realize people. it. Yeah. इसीलिए like we were so scared of this क्योंकि we are also on Chalchitra Talks not allowed to be non-intellectual. Like we have that pressure to talk about like cool things all the time, right? तो मैंने एक वीडियो बनाया था just out of like कि मैं so why I like चेतन भगत लाइक ऐसे जिसमें मैं वानी और मैं बात कर रहे थे. इट वाज अ फिक्शनल वीडियो वीएम कॉलिंग वीएम का एक एपिसोड था वेयर आई जस्ट कॉल वानी एंड टेल हर आई डोंट माइंड चेतन भगत. उसकी ये स्क्रिप्ट थी कि यार मेरे को तो ठीक लगता है, मैंने तो सारी किताबें पढ़ी है. और मतलब उस पे मतलब बिकॉज जस्ट टू गेज हाउ पीपल विल रिएक्ट टू इट, इट वाज जस्ट लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट आई वांटेड टू डू कि कैन दे टेक इट. लाइक जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री पे एक सीरीज आती थी ना कि कैन यू टेक इट रवीश कुमार, कैन यू टेक इट विनोद दुआ. तो ऐसे कि कैन आवर ऑडियंस टेक इट. लाइक द आइडिया ऑफ मी सेइंग कि हे I hate Tamasha or hey that like कि I like Chetan Bhagat because by norms you are supposed to like a particular night. मतलब हमने भी एक format set कर दिया. It's like also a monster you build yourself. हमने इतनी इंडी बातें करके हाँ. I'm so sorry, I hate to bring this up, but one of the patrons left because of that video, right? Yeah. One we had a patron who left because I said कि I am okay with the existence of Chetan Bhagat, and that was exactly why आप imagine कर रहे हो a person left, they backing us because they thought कि we were shallow that we like Chetan Bhagat, and that was exactly what I wanted to test. Yeah. I find people like at the end of the day, who is going to decide for whom? मतलब let's say Vaani likes V.S. Naipaul's books. ठीक है.
and by extension that means Vaani likes VS Naipaul. Hmm. That is the thing, na? When Yeah. the art and artist wala Yeah. bit, right? So if I like Woody Allen's movies, then somehow by extension I'm approving Woody Allen's behavior, which Yeah. has nothing to do with him. मेरे को नहीं पता भाई वो क्या करता है अपने private life. Yeah. So now we have reached that stage where we are finding difficult, like very difficult to distinguish between writer and whatever the writer stands for. Yeah. So let's say Vaani और वैभव से कि मतलब यार उनको 5 point someone पसंद है. हाँ. तो ये पसंद है भाई. क्यों पसंद है? क्योंकि शायद सबसे पहले it might be one of the first books that you ever read. So some connection will be there. ठीक है. So now you can't go public and say कि मतलब यार I like that book or because वो distinction हम लोग clear नहीं कर पा रहे ना कि मतलब यार book और writer में difference है. The writer could be anyone. He could be a very shallow person. He could be idiotic person. But how does it matter? Because your connection is with the book, right? Yeah. Characters in the book, right? Yeah. I think lines तब blur होती है when it's a stand-up comic because वो उसका आर्ट क्या है वो खुद like उसके शब्द जो वो जाके in like totality present करता है वो किसी और मीडियम के थ्रू नहीं आ रहे जब वो स्टेज पे जाता है जैसे मैं अगर मान लो वैभव मुंजाल का आर्ट यही है कि वो जो स्ट्रीम पे आके रात को बात करता है देन मतलब लाइक यहाँ पे फिर हम जो रोगन पे पहुंच जाएंगे अगर इस वाले उस पे थ्रेड पे बिकॉज जो रोगन के व्यूज और जो रोगन का आर्ट इज जो रोगन नो लाइक द ब्रांड एंड द आर्ट एवरीथिंग मिक्सेस विद इटसेल्फ बट लाइक व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स और व्हेन इट कम्स टू सिंगर्स वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है बट अभी जैसे कंटेंट बन रहा है जैसे शक्ति व्यूज डालते हैं वो लिंक्डइन पे कुछ लिखते हैं ट्विटर पे लिखते हैं तो वो ही तो शक्ति है राइट तो यहाँ पे लाइंस ब्लरी होती हैं कि अगर मेरे को शक्ति से देन कोई दिक्कत है देन हाउ डू आई मेक द डिफरेंस इसलिए डेव शैपेल एंड लाइक ऑल द कॉमेडियंस वाला गेट्स इंटरेस्टिंग विल यू स्टिल गो टू वॉच देयर शो यू कैन से कि आई एम जस्ट सपोर्टिंग द आर्ट बट वो आपके सामने आर्ट खड़ा है आर्ट इज अ लिविंग बीइंग देन काफी फिलोसॉफिकल हो गया नो देन वही तो है ना वही लाइन जो है डिफिकल्ट है ना लाइक let's say 20 years ago you were a very different person ठीक है and you said a lot of things back then and you did a lot of things back then which you don't approve of right now but as a person you are not there anymore right जैसे कोई तुमसे पूछता है गंगा कहाँ है गंगा तो है ही नहीं तो गंगा तो कॉन्स्टेंटली बह रही है ना हाँ तो वो वाली बात तो हमारे पे भी लागू होती है ना how are we going to say कि मतलब यार Vaibhav stopped evolving in 2021. उसके बाद सब कुछ it doesn't work like that, right? So I think that is the problem, and it affects art world because art world is supposed to be very exhibitive, but it also affects non-art world. Even people like normal people, I feel it affects them. Sooner or later, it will affect them. And they'll be कटहरे में खड़ा कर दिया उनको और बोलेंगे यार तुम तो बहुत ही शर्मनाक गिनौने इंसान हो whatever like the words are which we use now so I feel we are in a very sad state of social affairs I just think like right now we're talking about this and 10 years down the line if somebody were to see this video they can't judge us by whatever नहीं इस क्लिप के साथ हम कैंसिल भी हो सकते हैं लाइक यहाँ पे क्लिप निकाल दी जहाँ पे मैंने डेव शैपेल बोला उसको मिक्स करके ऐसे कुछ लगा दिया एंड लाइक शक्ति को डीप फेक करके शक्ति के ऊपर डेव शैपेल लगा दिया कुछ तो मतलब you never know dude but I'm just saying like for this conversation like people can't judge us like 10 years from now for the conversation we're having right now they can Vaani like they will but it's really because so many things will change so many, perhaps it'll be a sin to have blue lighting in your background I'm just saying आइए हम आपको मकबरे में लेके चलते देखिए यही वो रहते थे जिनको 1 लाख सब्सक्राइबर से पहले कैंसिल कर दिया गया द लीस्ट फेमस पर्सन टू एवर गेट कैंसल्ड उनके 1 लाख सब्सक्राइबर भी नहीं थे गौर से देखिए इस लाइटिंग को but it's funny you know like even like in the closest friend circles you suddenly started being so politically correct because or even after you crack a joke you're like hey with all due respect like that's what I do I'm like I'll crack a joke and then I'll get worried that the other person might get offended I'm like hey with all due respect I didn't mean it I was just kidding yeah क्योंकि it's not even important
बिस्वा का वो है ना स्टैंड अप, ब्रो अब ज्यादा हो रहा है वो। अब किसी भी चीज, मतलब तुमने 2 लाइनें बोली, ब्रो कल इंडिया आज हार जाएगा, ब्रो अब ज्यादा हो रहा है। इट्स दैट बैड, राइट? I don't like Kaju Barfi. या Bro. ब्रो अब ज्यादा हो रहा है। जैसे मैंने आज गहराइयाँ पे वीडियो बनाया। आई लाइक द फिल्म, आई रियली लाइक द फिल्म। मेरे को कुछ इश्यूज थे तो मैंने उससे एक लास्ट में सेगमेंट कर लिया, बट ओवरऑल आई वुड रिकमेंड इट टू पीपल। एंड वहाँ पे मेरे कमेंट्स में एक बंदा कह रहा है यार मेरे को तो पसंद नहीं है, मैंने ट्विटर पे बोल दिया एंड एवरीवन इज अटैकिंग मी, प्लीज समवन हेल्प मी। आई वाज फीलिंग लाइक सो सॉरी फॉर हिम। ही इज सेइंग कि यार मैंने जाके बोल दिया नहीं आई पसंद, खत्म कर दिया उसको लोगों ने। देखो गहराइयाँ पसंद कैसे नहीं आई। Yeah. Again, like, see, that's the thing, na. I don't know who okay, I won't say the original thing, but the moment you start telling people ki, oh, you can't watch this, you have to watch this, that's the moment you stop being a democratic Yeah. insan, right? Yeah. It's ridiculous how people don't see through it, and everyone wants to be a liberal. Yeah, The moment you label it, you're no longer a. and I want to call someone out here, like the 5-year-old version of myself. मैं जब कोई मेरे को कोई बोलता था ना कि तूने ये पिक्चर नहीं देखी, तो मैं भी एक शक्ल बनाता था। और अब मेरे को लगता नहीं देखी तो 2 घंटे जाके देख लेगा। ऐसी कौन सी चीज है वो जो नहीं कर सकता? अगर नहीं देखी तुमने 1929 के एंडेलुसियन डॉग, जाके देख लो, क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं इस चीज, हाँ, इस चीज से अगर मॉरल हाइस्ट वो ले रहा हूँ, लाइक कि ये मैं मॉरली एक सुपीरियर ग्राउंड ले रहा हूँ कि मैंने एंडेलुसियन डॉग देखी है, देन तो मतलब मेरी एग्जिस्टेंस ही स्कैम हुई ना। मतलब मैं इस चीज पे ट्रिप कर रहा हूँ कि तूने एंडेलुसियन डॉग नहीं देखी, मैंने देखी है। मतलब तूने तारकोस्की की पिक्चरें नहीं देखी, मैंने देखी है। वो देख लेगा यार, उसको एक दिन दे दो, 24 घंटे होते हैं दिन में, मतलब 2-2 घंटे 3-3 घंटे की पिक्चर देख के। एंड आई यूज टू मेक अ फेस, मैं लोगों को ऐसे गंदा नहीं फील कराता था, बट ऐसे वो तूने ये नहीं देखा, नाउ आई एम लाइक अरे यार प्लीज देख ले, मैं से प्लीज 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 देख ले। अब मेरा बेगिंग वाले में ज्यादा चला जाता है, जजमेंटल में कम जाता है। ये कॉलेज जैसे एक चीज मैंने अभी चेंज किया। सो सॉरी टू एवरीवन जिसके सामने मैंने शक्ल बनाई थी जब आपने कहा कि आपने मनी बॉल नहीं देखी, सक्सेशन नहीं देखा, व्हाटएवर। अरे वो तो arrogance of youth है यार. I'm not हाँ saying you're old now, but I think that's arrogance of youth when you तुम्हें नया नया चस्का लगता है कोई या अच्छी चीज का ना, या तो यू फील अरे यार तुमको मालूम पड़ गया, सत्य मालूम पड़ गया, तो तुम पूरी दुनिया को सत्य बताओगे. यू वॉच फाइट क्लब है, तुम्हें लगता है यार फाइट क्लब देख, एंड द अदर पर्सन इज लाइक मैंने तो नहीं देखी है, तो यू फील कि यार द यू आर कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, या ठीक है, बट द वे यू कन्वे इट कम्स आउट अक्रॉस एज वेरी एरोगेंट और व्हाटएवर. यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। कॉलेज में हमेशा एक ऐसा इंसान होता था, ये थोड़ा सा व्यूअर डिस्क्रिप्शन इज एडवाइज्ड, जो ड्रग होता है एलएसडी। तूने एलएसडी ट्राई नहीं किया? Like you will always meet that one person in life who will tell you you are a loser, you are nothing if you haven't tried it. और मैं ऐसे नहीं नहीं सर नहीं किया। बिकॉज जैसे लाइक आई डोंट स्मोक राइट, तो मेरे को ऐसे इतना नीचा फील करा, अरे यार। Me too. तो मैंने इसे पिक्चरों के लिए कभी किया, एंड आई एम सेइंग वी काइंड ऑफ ऑल आर गिल्टी फॉर इट एट सम लेवल। गाइस कोई अपने और सच बताना चाहता है तो प्लीज बताओ। आई शुडंट बी द ओनली पर्सन लाइक हु इज कन्फेसिंग थिंग्स। जब आपने किसी को ऐसे फील करा अरे तूने ब्रो डैश 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 नहीं किया एक्सपीरियंस, या डैश 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 नहीं देखा, प्लीज बताना। Yeah. I judge people when they're very arrogant. Like, हम तो किताबें पढ़ते हैं, it's a waste of time. Or yeah, movies ना, so whatever. I really start judging them. Then it's really not a right thing to do, but I can't help it. मतलब you are saying कि you judge people. I judge people when they're very arrogant about not doing something, not liking something, or liking something a little too Actually, you much. should have stopped after saying arrogant. That is more than enough. You Yeah. don't have to explain each other. Because arrogance, I feel, is one of the lowest of human traits. I feel like the moment you are arrogant, I think you've already lost. Yeah. Because the pinnacle of greatness comes from humility. So the moment a person in front of you shows arrogance, it means there's nothing to be. I don't feel we are an arrogant person will be able to inspire you. Maybe on sports level, maybe yeah. When Cristiano Ronaldo shows arrogance, Yeah. you feel हाँ ठीक है, मेहनत किया भाई साहब ने, तो ठीक है, अच्छा है. But someone
let's say from startup world, and he's being very like cocky and all that. But जैसे पता नहीं क्या. पर यहाँ पे काउंटर क्वेश्चन है, मेरे को लगता है ये स्पोर्ट्स इज नॉट द ओनली प्लेस जहाँ ये होता है. चलो स्टार्टअप में ये लाइक फेक गॉड ज्यादा होते हैं, बट लाइक मान लो कोई लिटररी बहुत बड़ा गॉड हो, लाइक लेट्स से Like there were so many names, no? Like I हाँ just mentioned Naipaul. Naipaul was known to be very arrogant. So many writers of very high caliber, they were considered arrogant and very difficult to deal with. Okay. And the best part about us is we don't have to deal with those people. We only have their books, हाँ right? But I'm pretty sure the people who were dealing with them on a daily basis, it could be the publishers or the editors and whoever the people they were like rolling around with. I'm pretty sure they were like tired of them. कि मतलब यार इनसे क्या मतलब, when you have lightness in you, right? When it's easier for people around you to be with you. नहीं, बट शक्ति मैं ये कह रहा हूँ कि व्हाई इज इट ओके अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कर रहा है, एंड व्हाई इज इट नॉट ओके लेट्स से Because it's a very exhibitive arena, right? कि मतलब sports है तो बहुत ही exhibition है वहाँ, तो I feel it's okay. As an actor, you get to play arrogant roles, but as a person, if you're arrogant or if you're ridiculous, the way some actors are apparently not meant to be, just they end up being like that. It's not okay. I feel some things are on screen and some things are off screen. I feel as writers they are off screen, no? ओके ना, isn't it? क्योंकि जो लोग सामने आ रहे हैं, अब वो लोग अगर like Vaani said, if they are arrogant for whatever XYZ reason, I feel it's perfectly all right to be turned off by them or be pissed at them. ओके. सो व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फेल्ट यू वर एरोगेंट? During my younger days, I feel I used to have this very uppity attitude about what I learned or what I knew or what kind of movies I watched. I was not vocally arrogant, but I feel even in my writing, when I go back to my old blog post, I see that arrogance there. कि मतलब मेरे को सब कुछ पता चल गया क्योंकि मैंने 4 किताबें पढ़ ली. And then as you move towards your 30s and then you cross your 30s and then वो ठहराव आ जाता है and then you realize कि मतलब यार मैं तो बेवकूफ था. So I feel that realization is what softens you. But I feel everybody at some point or the other they. But are you regretful of that phase of life? I feel you look back and you realize you've been idiotic because that's what happens now. तुम्हें कुछ भी पता है, राइट? अभी वो तुम्हें लगता है वही आंसर है, तुम्हें लगता है यही सही आंसर है इसका, तो जबकि ऐसा है नहीं. 5 साल बाद तुम्हारे आंसर्स चेंज हो जाएंगे. That's why they say no कि मतलब you should always stay faithful to your questions, not your answers, because answers keep on changing. So everybody, I feel you, me, Vaani, everyone who is watching, I'm pretty sure they've all been guilty of arrogance at some point. Even today, when we deal with our parents, you notice the arrogance that we have because we feel हम उनसे ज़्यादा scientific है, जबकि हमने कुछ उखाड़ा नहीं है, but हम act ऐसा करते हैं कि यार हम उनसे ज़्यादा scientific है, हमने ज़्यादा दुनिया समझी है, हमें क्रिप्टो करेंसी समझना है, जबकि कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, because their struggles were completely different. अगर हमें उसमें डाल दो, तो we won't be able to survive the way they did. Right. उनका अलग ही चल रहा था, उनका अलग ही स्क्विड गेम चल रहा था. So if you think about it, the arrogance that we have towards our elders or particularly our parents, it's very evident कि मतलब where we are as people. But I'm pretty sure after a certain sinusoidal wave, we reach a stage where we realize कि मतलब यार बेवकूफाने थे हम लोग. I feel everybody goes through that. I'm pretty sure you also go. Everybody goes that. There's no escape from those learnings. ओह, तैयब हैज एंटर्ड द वेटिंग रूम. क्या टाइमिंग, जैसे ही शक्ति का खत्म हुआ तैयब हैज एंटर्ड. ओह Hi Tayyab. तैयब भाई, Hey, कैसे हो? Hey. I'm good. कैसा है भाई, कहाँ गायब हो गया था? Sorry, मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी. अभी ठीक है? अभी ठीक है, I'm good. हाँ. प्लीज मत कहना कि कोविड हुआ था. नहीं, कोविड नहीं, थोड़ी सर्दी लग गई है. नाइस. तैयब भाई आपको पता है? Can you hear me? सब हाँ, आवाज सब ठीक है? बढ़िया है. आप कैसे हो? I'm good. बहुत क्या बात चल रही है? एरोगेंस की बात ही चल रही है. मतलब शक्ति ने एक बहुत बड़ी बात बोली
तो मैं तो डर गया हूँ, मेरे को नींद नहीं आई. Arrogance is the dash dash like human trait, like the lowest form of क्या था. Human trait, yeah. हाँ, so arrogance is the lowest form of human trait, कि उससे बुरी चीज कोई नहीं हो सकती अगर एक इंसान एरोगेंट है. बट देन शक्ति ऑल्सो सेड इंटरेस्टिंगली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एरोगेंट है या कोई स्पोर्ट्समैन एरोगेंट है तो वो समझ आता है. स्पोर्ट्स के अलावा नहीं, आप लाइक इट्स नॉट अलाउड. मतलब आप समझ रहे हो, मैं थोड़ा सा मसाला लगा रहा हूँ जिससे कि तैयब थोड़ा सा ट्रिगर हो. हाँ नहीं, I I'll said jump in when I feel like एक बार आप थोड़ा आगे हाँ हाँ, चल बात हम आगे कंटिन्यू बात करिए. करते. तैयब भाई आए एकदम से, तैयब ओपी तैयब वो भी हो गया. बहुत टाइम बाद हम चारों साथ में बैठे हैं ना. yeah, बहुत टाइम बाद यार. yeah. हाँ. वानी, डू यू ऑल्सो थिंक कि एरोगेंस इज अ वेरी लो फॉर्म ऑफ ह्यूमन ट्रेट? लाइक आपका क्या मानना है? क्योंकि मेरे बहुत डिफरेंट ओपिनियन है यहाँ पे. Hmm. I think like arrogance, as I look at it, it's not nice. I can be arrogant at times, but I really When was the last time you were arrogant? today. I'm still working. Okay, I'm still. ये बहुत सही था. वानी को डंडी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाए बेस्ट कॉमिक टाइमिंग इन अ स्ट्रीम का. ये तो बहुत ही ज्यादा सही. इसकी क्लिप निकलनी चाहिए. Yeah, I'm still working on myself, and there are a few things I've realized that as an individual, I do not like in other people, and they turn me off a lot. And one of them is when people are being arrogant. There's a difference between being arrogant and versus you being confident or aggressive or assertive. And I think we confuse that a lot. But like especially when it's like get that superiority complex and you're constantly trying to pull people down. I hate it. And if I didn't pull anyone down though. Yeah, got it. So but I do not Got it. like arrogant people. हाँ. यार मेरा ये कहना है कि sometimes you don't have any other option. मतलब you don't want to be arrogant, but कभी कभी ऐसा होता है that you're angry with, I don't know, with yourself or with the world, and you come out as arrogant. Right. मुझे ऐसा लगता है. हाँ. तो अब वो हो सकता है. I don't know what other people were talking about. मैं अभी ऐसे बीच में jump in कर रहा हूँ. But it's more like आप किसी present state में हो and people might see you as arrogant, and you might be like वो होता है ना, indifference वाली feeling हो रही है आपकी अंदर कि आप you're not relating to anything else going out in the world, और आप अपनी धुन में चल रहे हो, and गुस्सा है मतलब खुद के अंदर, and वो कुल मिलाकर के ये कि आप करना नहीं चाहते हो, बट वो निकल के आपकी हर बात में, हर एक्शन में निकल के आता है, and you kind of आपको एक काउंट कर लिया जाता है एरोगेंट पीपल के अंदर. I'm not defending arrogant people, but I'm just saying that not everybody is arrogant by choice. I'm just saying. वानी कुछ वो ऐड होता है ना करना चाहेंगे? I circumstances just वगैरह want you to होता है. define my definition of arrogance so that like everyone Please knows do. where I'm coming from. I think for arrogance, like I said, like you have the superiority complex, and I also think like you have the unwillingness to learn or listen. हाँ. That's like a big Yeah. thing. I mean, Big that's one yeah. major हाँ. problem I have. Like the unwillingness to just even accommodate the other person's view, and you're constantly just like ये तो है ही नहीं, because I don't look at it this way. If you guys can come थोड़ा रिवाइंड कर सकते हैं कि कहाँ से बात स्टार्ट, ये कहाँ से बात चालू है कि तैयब 40 मिनट लेट, ये एरोगेंस कहाँ से आ गई? Yeah. No. तैयब, when is was the last time you were arrogant? I Yeah, thought I you were think going to दिन ask. में आप कई बार arrogant हो जाते हो, मतलब कोई as I incident? said, हाँ. unwillingly. When was the last time you are. were willingly arrogant? तैयब कह रहा है I बाद में think बात. last week. Last week week. हुई थी. Last week. Got it. I like the honesty. Sometimes when you feel like that things are not happening as you want to, and you giving in as your best, but फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है कि arrogance आता है give up करने के बाद में. मुझे ऐसा लगता है. Very interesting. When you start feeling like that, यार कुछ हो नहीं रहा है and I don't belong there, so you start separating yourself from that situation. Again मैं बहुत generalized way में बात कर रहा हूँ. I don't know what other people were talking about.
तो वो you the other people might see me as arrogant, but it's like मैं शायद मुझे लगता है कि it's a form of defense, self defense वाली बात चल रही है यहाँ पे, that you are trying to save yourself, और आपको ऐसा लगता है कि इसके बाद में मेरे पास में कुछ बचा नहीं है other than saving myself, तो I would rather be distant from the thing that is happening. मुझे ऐसा लगता है. Again, I still don't understand ये कहाँ से बात चल रही है. अरे मैं चल बस रही है तो अब तू फ्लो में बह जाना, मतलब if I make sense, हाँ it's good. हाँ. If I don't, तो please समझिए बात को. मेरे को अब 2-4 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं. सबसे पहले तो जो अभी 120 लोग देख रहे हैं, जल्दी से स्ट्रीम लाइक कर दीजिए. कितने लाइक Yes, से कोई yes, please चेक do. कर सकता है गाइस? I think I'm seeing 127. जल्दी से Oh. 150 लाइक कर दो गाइस, जल्दी से 150 लाइक कर दो. एंड चैट्स Yes, में yes. बताइए. And I'm sorry, मैंने recognize ही नहीं करा. I'm sorry. शक्ति भाई है. Hey, hi. 200-300 लाइक जाने चाहिए. क्या बात कर रहे हो? हाँ, शक्ति भाई और कैसे तैयब हुआ भाई है हम सब बहुत शक्ति? टाइम बाद बैठ रहे हैं. बहुत टाइम बाद शनिवार रात, शुक्रवार रात बन गई है. एंड लाइक दिस इज हाउ वी यूज्ड टू शुक्रवार, स्ट्रीम. हाँ, लाइक नीरज पटेल यही कह रहे थे, शनिवार रात स्ट्रीम्स आर बैक. हमें चैट में बताइए, लाइक जितना ऑनेस्टली हम सब बात कर रहे हैं तो अभी बहुत ही ऑनेस्ट बातें चल रही हैं. व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वर एरोगेंट, लाइक इन द चैट्स और लाइक इन इवेंट वेयर यू फेल्ट दैट यू willingly, that you felt like is, yeah, that you had to be arrogant in order to handle that situation. आपको ऐसा लगा? तो हाँ. वो बताइए. Yes. Yeah. So I'll give you an example of arrogance, willingly जो arrogance आती है. Succession का एक example है. ज़्यादा नहीं भी देखा तो समझ आएगा. ठीक है, एक बहुत बड़ा बंदा है लोगन रॉय, एक बहुत बड़े मीडिया हाउस का लाइक वो है, लाइक ही इज द हेड ऑफ मालिक इट, है. मालिक है मान लो, लाइक अंबानी लेवल का उसके पास पैसा है. उसको एक बार ना प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से मिलना था कि वो किसी प्रॉब्लम में था. और जब आप इस लेवल पे होते हो ना तो ये लोग बहुत एक्सेसिबल हो जाते हैं, जैसा शो में दिखाया है, शायद हो भी जाता है. तो वो गया वहाँ से मिलने, प्रेसिडेंट से, यूएस के प्रेसिडेंट से मिलने. एंड वहाँ पे उनका सेक्रेटरी के कहते हैं, मिस्टर लोगन राय, आई एम सो सॉरी, ही जस्ट लेफ्ट, ही हैड टू गो, कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई, बट आप मुझे बताइए कि क्या हुआ, लाइक एंड लाइक ही सेंड्स हिज अपॉलॉजीज. और लोगन रॉय की ईगो हर्ट हो जाती है. तो तूने मेरे को मना कर दिया होगा, तू प्रेसिडेंट यूएस का घर पे, तूने मेरे को कैसे मना कर दिया. तो वो उससे बात ही नहीं करता, वो घर चला जाता है और लाइक वो जाके अपना ऑफिस चला जाता है. एपिसोड के एंड में लोगन रॉय के पास यूएस के प्रेसिडेंट का कॉल आता है. दिस इज सच अ ग्रेट, ये सीजन 1 में आता है एपिसोड. प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज कॉलिंग लोगन रॉय, ओके, एंड उनकी सेक्रेटरी उठाती है लोगन रॉय की फ़ोन. मिस्टर लोगन, लाइक द प्रेसिडेंट इज ऑन द लाइन. वो बोलते हैं या सेंड हिम थ्रू. तो ये बोलते हैं या सेंडिंग हिम इन 3 seconds, 3, 2, 1 देते. तो वो फोन आ गया, मतलब वहां पे वो लाइन पे है, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया, लाइक मिस्टर प्रेसिडेंट विल बी, लोगन रॉय विल बी विद यू इन अ सेकेंड. और वो बॉल के साथ खेल रहा है. ही मेक्स द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स वेट फॉर 10 seconds. बॉल के साथ खेल रहा है एंड फिर वो फोन उठाता है. मिस्टर प्रेसिडेंट, राइट, दिस इज लाइक विलिंगली शोइंग एरोगेंस, लाइक कि तूने मेरे को वेट कराया ना, तू होगा यूएस का प्रेसिडेंट, अब मैं तेरे को 10 सेकंड वेट कराऊंगा. और जब बात की, हाँ बताइए, कभी कभी जब नोइंगली लोग लेट आते हैं, व्हेन दे थिंक कि दे कैन अफोर्ड टू डू इट. तैयब की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मैं या हर्ष भाई, वो एक काइंड ऑफ सिचुएशन जो I आपने अभी don't- समझाई मेरे को. हाँ. आई एम सॉरी. यस प्लीज वानी. No, please, Tayyab. नहीं अभी पहले आप. जैसे आप यस प्लीज थैंक यू. जैसे आपने एक सिचुएशन बताई, तो आई थिंक वो एक सिचुएशन है दैट दिस लोगन पर्सन wants to feel powerful, and वो उसको पावर तभी मिलेगी that when he feels that for about 10 seconds only the president of the United States is waiting for me. तो उसको sense of accomplishment आ रहा है वो. तो वो एक arrogance का एक तरीका हो सकता है कि when he avoids certain things for some time, he feels that yes the world is waiting for me. वो एक arrogance हो सकता है. But sometimes, जैसे मैंने बोला, sometimes arrogance could be a way of self-defense. और वो unknowingly होता है. That when you give up and all you have is yourself, and you want to save yourself, तो मतलब आप समझिए बात को कि कुछ ऐसी बात हो रही है when you're like कि अभी मैं कुछ बोलूँगा तो मेरी बात का कोई वैल्यू नहीं रहेगी. तो I want to like calm down and like let them speak
and let them say what they want, and then I'll speak. तो वो that might seem as arrogant, but वो ऐसा नहीं है शायद. I don't know, मैं बहुत हवा में बात कर रहा हूँ शायद, मुझे नहीं समझ आ रहा. What Tayyab is talking about is जो defense mechanism है हमारा, where we judge the environment पहले, and then we realize कि we are how far can I push myself. हाँ. ठीक है. So it depends on it's like poker game चल रहा है type, right? And during such moments, you actually have lost a lot. ठीक है. And now what is left is your pride. तो अभी pride को तुम्हें बचाना है कैसे? Because that is only left for you, right? And during such moments, तुम्हारा जो basic necessity जो pride है, that उसको बचाने का जो technique है, that might come across as arrogance. And in reality, you are at the last edge, right? उसके बाद तो breakdown है. So that could be a misconstruction कि हमें समझ में नहीं आया कि बंदा क्या किससे गुजर रहा है. Right? So that might also work there. The example that Vaibhav gave was completely different. It's a very powerful man. ठीक है. उसके लिए like Tayyab said, उसके लिए वो जो 10 सेकंड का जो हाई है ना, वो मैटर करता है. Because तुम उस स्टेज पे हो तो तुम अपने लेवल के प्लेयर के साथ ही खेलोगे ना. अभी किसी शॉफर को 20 दिन भी वेट करा तो क्या फर्क पड़ता है उसको. Exactly. So it's a Would you उनका अलग लेवल का arrogance है. would you say, like, I kind of think like Vaibhav ne jo example diya, that wasn't an example of arrogant behavior. I It's a think very that was a childish. I think power move or something. Yeah, but Ego है तो at massage. the end of the see, if I make you wait unnecessarily, I'll be seen as arrogant, right? You Yeah. understand? So the same rules must apply for this guy also. Just that in our head, he is seemingly stylish. Yeah. But उन लोग अलग लेवल का गेम खेल रहे हैं ना, तो maybe that's just perspective. क्योंकि हमें पता ही नहीं उस रूम में क्या फील होता है, because we never been in that room, right? जब एक बच्चा टैंट्रम्स थ्रो करता है, जब छोटा बच्चा, तो इज इट एरोगेंस और इज इट जस्ट चाइल्डिश बिहेवियर, और कहीं ना कहीं मिक्स होते हैं That's क्या? just हाँ, क्या कह रहे हो? It's a very good question actually. बताओ guys. I think बच्चे को तो इतना जो है चीजें डिफाइन नहीं है पहले से उसके यूनिवर्स के हम अंदर. करते हैं ना, तो मतलब चलो बच्चा उसके हाँ 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 नहीं. हम सभी ने किया है. हाँ. इसमें कोई दो राय नहीं है. तो इट्स लाइक फॉर एग्जांपल इफ some child is throwing tantrums कि मुझे तो ये चाहिए और इसके बिना मैं नहीं हिलने वाला हूँ यहाँ से, मैं तो सड़क पे लेट जाऊंगा and all those things. तो वो थोड़ा सा it's like the only way he sees things happening to his way is like जिद करना. तो उसको ये लगता है कि मैं एक हद तक जिद करूंगा, उसके बाद में my parents or my friends will give in and then they'll get me what I want. तो वो I don't know उसको arrogant बोलेंगे या नहीं, but हाँ ऐसा बिहेवियर जब आगे बढ़ता जाएगा और वो जब tantrums एक अलग टाइप के फेंकने लगेगा, जब वो बड़ा हो जाएगा उसको साइकोलॉजिकल समझ आ एंटी जाएगी. सोशल एलिमेंट बनेगा वो. हाँ. तो आई थिंक इसका सोल्यूशन यही होना चाहिए कि यू शुड नॉट गिव इन एज पेरेंट्स या एज फ्रेंड्स ऑफ हिज, के वो कर रहा है तो उसको समझाओ कि नॉट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एवरीथिंग दैट यू वांट व्हेनेवर यू वांट. तो उसमें एरोगेंस या टैंट्रम्स या चीजों को ऐसे करना कि मैं इसके बिना हिलूंगा भी नहीं, वो नहीं होने वाला. उसको समझाना बहुत जरूरी है. आई थिंक वहीं से हम्बलनेस स्टार्ट होती है, दैट यू माइट नीड समथिंग राइट नाउ but you're not going to get it right now. So you have to like live in this world which you're getting right now. Yeah. यहीं से वो फिर आगे डेवलप करता है वाली स्किल कि हाँ I might need this thing and that thing every other day, but I'm going to get some of those. उस सबसेट का एक कुछ पार्ट मुझे मिल सकता है. वहां से वो बच्चा शायद एक अच्छी थिंकिंग डेवलप कर सकता है. I have a very stupid point, but like, Yes, please do. It's okay. either Tayyab is very patient or Tayyab hasn't babysat a child in the recent months. I have not. Because kids don't understand. They don't. Yeah. तो मैं एक जल्दी से एक चीज बोलना चाहता हूँ. एक दो लोगों ने कहा कि वैभव इज एरोगेंट बिकॉज वो चैट से क्वेश्चंस पूछ के चैट नहीं पढ़ रहे. तो आई टेल यू गाइस, मैं चैट कब पढ़ता हूँ जब बहुत अच्छा फ्लो बना हुआ था, और व्हेन वन ऑफ द लाइक गेस्ट्स और लाइक व्हेन एनी ऑफ अस इज स्पीकिंग, तो मैं एकदम से ये नहीं पढ़ सकता अरे इनका ये कमेंट है, फ्लो ब्रेक हो जाता है. तो जैसे ही मेरे को एक ऐसे पॉइंट मिलता है दो कन्वर्सेशंस के बीच में, दैट इज व्हेन आई सी द चैट. जस्ट सेइंग. बाकी एरोगेंट बोलना है, इट्स अप टू यू. हाँ.
मैं बोलता हूँ लेट्स ट्रांजिशन टू समथिंग एल्स फ्रॉम अरे यार दिस। आई बना थिंक हुआ है हमने ना बोल वो। दिया जो बोलने का है। हाँ हाँ लाइक तैयब। एरोगेंस पे अब और क्या वानी ने बोलेंगे? माइक उठा लिया, वो कुछ बोलना चाहती है। Yeah. हाँ यस प्लीज Nothing. डू। I was just fidgeting. हाँ। But yeah, kids are very तो Hey, where is Zaki? जकी भाई कहाँ है, तैयब भाई? लकी भाई से मेरी जो लास्ट बात थी, लकी भाई इज एट हिज होम, बट अभी उनका काम में थोड़ा हाँ ज्यादा इंटरेस्ट है और जरूरत है, जकी भाई वहां अगर लगे रहे। चैट में है तो बताइए, मैं तो आपको लिंक भेज दूंगा, जकी भाई को भी बुला लेंगे। आप मिले ही नहीं ना हमारी सारी पलटन से। शक्ति कब लास्ट टाइम, मतलब ऐसी हिंडॉल कहाँ है आपको लग रहा मैं होगा। लास्ट बार जब आया, हाँ नहीं लास्ट बार मैं जब था यहाँ तब जकी भी था और तैयब भी थे दोनों। हाँ 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 हाँ। नाइस। मैं तो ये पूछ रहा था शक्ति भाई, लास्ट टाइम से अब टाइम में क्या जिंदगी में क्या हम भी बदलाव यही आया, बात कहाँ कर रहे थे उनसे। हाँ कहाँ वहाँ? मैं वो यही मैंगलोर में ही हूँ। बस दो ही बेसिक मतलब चेंजेस हुए। एक तो ये कि 2 हफ्ते पहले कोविड हो गया था, पहले बार हुआ, और वो एक चेंज था। और दूसरा ड्राइविंग सीख लिया मैंने, या बस बेसिक सीख लिया, मतलब चला सकते हैं टाइप, जो पहले नहीं आता था। बहुत कोविड अच्छी। के बाद आपने ड्राइविंग सीखा, नहीं मतलब पहले नहीं, ठीक कोविड हो से गए कोविड उसके? से पहले। और कोविड से फिर पहले। कोविड हो कोविड गया। के ड्राइविंग, हाँ ड्राइविंग के कारण ही मुझे कोविड हुआ मुझे लग रहा है, क्योंकि हाँ वहाँ ड्राइविंग टेस्ट के लिए गया था ना, वहाँ 100 लोग थे पहले से। ओह। तो पहली बार मतलब इतने टाइम तक आइसोलेटेड रहने के बाद इतना बड़ा एक्सपोजर हुआ। सैटरडे को टेस्ट था, रात को आया, तभी से तबीयत खराब थी। संडे तक तो हो गया था, प्रॉपर हो गया था, फिर एक हफ्ते तक चलता रहा, जो भी ऊपर नीचे। तो यही दो ही आई कैन थिंक ऑफ, बाकी तो कुछ वहाँ नहीं, नॉर्मली था, सेम सेम घर के अंदर ही अब था। अभी आप बिल्कुल ठीक हो? आई थिंक आई यू थिंक, लुक। या आई थिंक सो, या थोड़ा सा थ्रोट में थोड़ा है इशू, बट अच्छा। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब अब तो ठंडा पानी सब कुछ बंद ही हो गया। आई एम फाइन, दैट्स व्हाई आई वाज कंसर्न कि व्हेन यू सेड कि यार तुम्हें सर्दी हुई, मैं सोचा यार यार दैट इज वेरी स्कैरी क्योंकि वहीं से शुरू होता है नॉर्मली। तो तो आपने घर पे आइसोलेशन वगैरह, मतलब यू टुक केयर ऑफ या योरसेल्फ? गर्मी ग्रेट। गर्मी रह के किया तो, नाइस। या, क्योंकि फैमिली वगैरह को तो बॉम्बे में सबको हो ही गया था, तो उनके लिए तो ऑलमोस्ट जुकाम के बराबर हो गया। हम्म। ओह। दे बीन पार्ट ऑफ इट, एवरी सिंगल वे हुआ है उनको पूरे घर को। तो पता था क्या है क्या नहीं है। तो अभी मुझे लगता है वी आर गोइंग टू गो टू दैट स्टेज वेयर इट विल बी कंसिडर्ड नॉर्मल फ्लू टाइप्स, कि मतलब यार हो रहा है, सबको हो रहा है, एज लग भी लॉन्ग रहा एज है। और कोई डेडली वेरिएंट ना है, मतलब हाँ दैट्स द हाँ, ओनली थिंग या जिसका मेरे को डर है। That is a questionable thing, मतलब you can hope for the best, but that's not going to happen always. हाँ I think या आज ही जो है ICMR की रिपोर्ट भी आई थी, एक renowned doctors were talking about that there is, of course there will always be a possibility, but when these guys talk about a possibility, तो एक concrete evidence के साथ में बात करते हैं, तो they were talking about this and they said that they are tracking Omicron वाला जो नया वाला variant है, and they're seeing 4 variants of the Omicron which ओ, are much more severe. ये क्या अपनी And एवेंजर्स मूवी बना रहे हैं, मतलब अब हर जगह नहीं, अपनी ओह शिट। I'm just stating that it's not that, मुझे लग रहा है काफी लोग बहुत ज्यादा ही एक तो हो चुके हैं कि used हो चुके हैं, they're like कि हाँ हो गया है यार कोरोना वोरोना, हाँ but it's like things are still happening, the virus is not partying around, वायरस अपना काम कर रहा है, तो हाँ, वायरस को भी you तो need to ईगो take care of हर्ट हो गई yourself. होगी ना, वायरस भी एरोगेंट हो गया होगा कि भाई मैं लास्ट टाइम कुछ नहीं कर पाया तो अगली बार आई विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। उसका यही तो सीन होता है, जितना मैं तो ये भाई से समझता हूँ स्ट्रीम्स पे, वो करता रहेगा भाई मैनिपुलेट करके, अब मैं ऐसे आऊंगा। यू नो अर्पित वाज टेलिंग मी अबाउट दिस गेम एंड ही विल किल मी बिकॉज मेरे को नहीं पता। अर्पित ने मेरे को गेम बताया था और वो पागल हो गया था कि उसको पता चला जब मेरे को इस गेम के बारे में नहीं पता है, जिसमें आप एक वायरस बन के वो गेम खेलते हो एंड आपका गोल होता है ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना। तो ये कुछ किसी को इस गेम के बारे में पता है, जो 100 लोग 110 लोग अभी स्ट्रीम देख रहे हैं, यू आर बेसिकली अ वायरस एंड यू हैव टू किल दी ह्यूमैनिटी। तो आप किस वेरिएंट के साथ जाओगे, कैसे जाओगे? और मतलब मैंने सुना एक बहुत ही ऐसे स्ट्रैटेजिक गेम है लाइक। I don't know about this, I don't know हाँ about ना this, नो आइडिया। या तो कोई आई but थिंक काफी इंटरेस्टिंग premise सेट कर रहे हो आप, काफी ऐसा इंटरेस्टिंग है कह रहे हो, बिकॉज द हाँ। वे अर्पित टोल्ड इट टू मी एंड ही रिकमेंड सम रियली गुड गेम्स। तो और ये कोविड से बहुत पहले आया था, ये बहुत साल पुराना गेम है, इट्स नथिंग जो कोविड में आया है। प्लेग इन, आई थिंक किसी ने नाम लिखा है, हाँ, प्लेग इंक। हाँ प्लेग इनकॉर्पोरेटेड है। I don't know if this is the thing. आई थिंक इट्स प्लेग, शायद ये वही है कि क्योंकि जैसे मैंने बताया था।
तो जो लोग देख रहे हैं प्लेग के बारे में बताइए, was I giving the right explanation or not? And yeah man, तो that is there. तैयब like what have you been up to bro? क्या चल रहा है? कोई नई चीज जो डिस्कवर की हो रिसेंटली एक्सपीरियंस वाइज, या कोई भी ऐसी किताब, मूवी, गाना, गेम, प्रोडक्ट, गैलेक्सी, कोई नई गैलेक्सी डिस्कवर की हो? 3 बॉडी प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो शायद की होगी। बहुत कुछ है, मतलब थोड़ा पर्सनल लाइफ में काफी चेंजेस आए हैं जिंदगी के अंदर। आई फील लाइक आई ग्रोन अप अ बिट। नाइस। थोड़ा काफी सालों से मैं बच्चा बच्चा बना हुआ था, बट हाँ थोड़ी 4-5 जगह थोड़ी लाते पड़ी मुझे, तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा आगे बढ़ा हूँ। बाकी टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्स, आई थिंक अगर आपने मेरी जो हमारी शनिवार की सीरीज चल रही है, अगर आपने वो फॉलो करी है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप एक्चुअली अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका है और डिप्लॉय हो चुका है और वो डेटा कलेक्ट कर रहा है। तो वो कलेक्ट कर रहा है वो डेटा जो बिग बैंग के टाइम पे निकला था, बट क्योंकि वो इतने दूर से आ रहा है तो अब हम उसको कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो वो बड़ी खूबसूरत चीज होगी कि हम एक्चुअली एक फोटोग्राफ बना पाएंगे बिग बैंग की वाओ 13.5 के बाद में। तो वो बड़ी बेहतरीन चीज होगी। तो इंशाल्लाह हमको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी, वो साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे हैं। बाकी हाँ बस ये पर्सनल लाइफ, इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया तैयब होगा भाई ने आपको वैभव कॉल की, अगर आप फॉलो कर रहे हैं। तैयब भाई अभी भी वो सब ज्यादा चल कुछ रहा है। बात थोड़ी कर सकते हो उसकी। नहीं हाँ लेट्स नॉट हाँ, तो गो इनटू तैयब दैट। भाई को आप लाइक फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, जैसा कि उन्होंने बोला ये आपका कॉल टू एक्शन है। और और मे बी डोंट फॉलो मी, आप वैभव को फॉलो कर लीजिए, वहां से अपडेट्स मिल जाएंगी। और फिर बस तैयब मेरे को ये डांट देता है रिक्वायर्ड। कि वो बस मैं अप्रूवल लेना पड़ता है तैयब से कुछ भी पोस्ट करने से पहले। बट लाइक नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा था, प्लीज तैयब एंड शक्ति दोनों के यूट्यूब चैनल्स फॉलो कीजिए। शक्ति का तो मेरे को यार तैयब तेरे को सबसे बड़ी बात बताता हूँ, मैंने अभी एक हैशटैग चलवाया रिवाइव शक्तिज यूट्यूब। शक्ति भाई ने यूट्यूब से संन्यास ले लिया, ये यूट्यूब वीडियो नहीं व्हाट? बनाते। हाँ अरे यार मैं तो मतलब मैं अक्टूबर में बंद कर दिया था मैंने, तो मुझे लगता है हाँ, अरे मुझे लगा कि व्हेन आई मेट लास्ट शक्ति भाई, आई थिंक उन्होंने तब शुरू किया था बहुत, तभी। हाँ हाँ मतलब बहुत ज्यादा स्टार्ट किया था, मतलब हाँ पुश हाँ कर रहे थे वो यूट्यूब हाँ, पे। तभी तो हफ्ते में कितने 5 वीडियो डालते थे। हाँ 4-5 वीडियो तो डालते थे तभी आराम भाई से। दिन भर में आई गेट टू सी शक्ति भाई इंस्टाग्राम, तो मैं देख ही लेता हूँ कि हाँ जो होता हाँ है ना रैंडम अननेसेसरी फैक्ट्स, हाँ, वो यूजलेस फैक्ट्स बहुत ऑफ द कंफर्म डे। करता हूँ। हाँ तो वो मैं तो कह मुझे रहा हूँ कि तैयब भाई जब हम आपके आने से पहले एक चीज कह रहे थे, हम रिएक्ट वीडियोस बना रहे थे शक्ति के वीडियोस देख के। तो ओह शक्ति भाई का एक नया वीडियो चलाते हैं, टाइटल है गुड व्हाई नॉट। गुड स्लीप इज एवरीथिंग। चलाइए। बिफोर दैट आई थिंक देयर इज अ सुपर चैट बाय कमलजीत ओह सिंह। थैंक यू सो मच थैंक यू कमलजीत, कमलजीत। बहुत अच्छा स्टिकर आपने यूज किया। गेम्स की बात हो रही है तो उन्होंने आई थिंक वो गेम्स का ओह गेम पैड की बात करिए, नाइस हाँ, नाइस। तो मैं आप शक्ति भाई का एक Okay, नया Jibin PK has noted something. Starlink lost 40 satellites. Okay, that's a big thing. मैंने इसको फॉलो नहीं करा है। इंशाल्लाह कल की स्ट्रीम में हम बात कर सकते हैं, अगर मैं इसको फॉलो कर पाऊंगा। नाइस। तो अब हम देखेंगे गुड स्लीप गुड स्लीप गुड स्लीप कहाँ गया, मैंने अभी देखा था। यू आर मेड ऑफ वाटर, हु यू आर। यार कहाँ गया गुड स्लीप, दिख रहा है क्या किसी को? अरे क्या आपको आपने टाइम के हिसाब से सॉर्ट करना पड़ेगा? फारूक शेख पे भी वीडियो बनाया, वेरी नाइस। आप ये गुड बताना। स्लीप। हाँ Uh, आवाज आ रही है तो बताना ना गैस। if शक्ति there is भाई one thing कॉपीराइट मत that मारना प्लीज। all of us should शक्ति भाई कॉपीराइट डाल के चलचित्र बंद करा देंगे। हाँ देखे, ऑडियो आ रहा है गैस तुम चारों को, आप तीनों को आई थिंक आई aspire I'm to getting the do, audio. आ रहा है? then that would be try to sleep long, like really long and कंफर्म कर दो तैयब वानी प्लीज, मेरे को एक बार पता नहीं चल रहा। या हाँ या ठीक है मैं चल रहा। Yes. if there is one thing that all of us should aspire to do, then that would be try to sleep long, like really long and really deep. It's not a sexual innuendo. It's a very basic need and a goal worth chasing. But the irony is, if you're chasing sleep, then you're already failing, because sleep, good sleep, at least sound sleep,
is a factor of how you're doing in your life. If you're leading a very stressful life, or if you're leading a very, very ambitious life and with lots of worries and tension and whatnot, then obviously your sleep is going to get affected. So it's a vicious cycle, right? And the only way to break it is to reach a stage where you can just cut off, like from the day you cut off and you own the night. The back of your head touches your pillow and you're gone, you're dismissed, and that is a goal worth having. I know people who sleep like babies, and even babies don't sleep that well. So, and being someone who doesn't sleep well, there are nights when I sleep well, but most of the time I don't. I can only be envious of sleepful people, not sleepy people. There's a difference between the two. So if you are one of them, then do let us know how you manage to do it. And there's no lesson, no observation in this video, just a tiny rant about why some people manage to sleep well and why others don't, although I'm not really going deep into why, but just on the surface, maybe all of us should be living in a world where all of us are like falling asleep like anything. And if we are very, very lucky, then we'll sleep so deep that we'll wake up as the person we always wanted to be. Wouldn't that be nice? ओ भाई तैयब भाई क्या लगा? काफी मतलब it's like it's an advice sort of a thing. हाँ मुझे यही लगा कि first of all the reason why you won't be sleeping as you should be, जैसे शक्ति भाई ने बोला, could be because of anxiety या tension, या you are kind of chasing something which is not letting you sleep. So that could be one of those things. And if that is the case, then it's okay, kind of. आपके सपने बड़े हैं, सोने से ज़्यादा आपको ज़रूरी है आप उस पर काम करें. But in the long run, I think what Shakti Bhai was trying to say is that you need that sleep. And if you're not going to get that sleep, then whatever the dream that you're chasing, it's going to get affected ultimately. Because whatever the daytime या जो waking time that you're having, उसमें जो productiveness आपके अंदर आनी है, वो तभी आएगी when your mind gets enough rest with deep sleep. जैसा शक्ति भाई ने बोला, it's not just about sleeping, it's about being relaxed and having that 6 to 8 hours of sleep, जो आप sound sleep जिसको बोलते हैं. And अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप दिन में 2-3 बार सो रहे हैं, छोटे छोटे क्या बोलते हैं इंटरवल्स में सो रहे हैं, तो that might count as 8 hours of sleep, but it won't help your mind rest. तो वो आपको जरूरी है उसके लिए. तो मेरे हिसाब से शक्ति भाई जो बोलना चाह रहे थे, if you are actually even working towards your dream, then also you have to kind of make it a priority that you get that sleep. Because जो waking hours में आपको जो attentiveness चाहिए वो तभी आएगी जब आपका दिमाग अच्छी तरह रेस्ट कर चुका होगा. इसलिए वानी आज नाइट सूट if you're पहन के आई working है. towards your dream, you should also make sure that you're working towards your sleep also. Directly affected है. मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात कही शक्ति. बहुत सही. इंटरनेट यूजर का कमेंट है, थोड़ा एंग्री टोन होती शक्ति भाई तो इंस्टा पे वायरल रील बन सकती थी. नहीं, आई थिंक शक्ति भाई की सबसे मुझे खासियत जो लगती है, जो मेरे को उनकी पोस्ट में भी, उनकी वीडियोस भी जो मैंने देखे हैं, इट्स द हम्बलनेस. इट्स अबाउट जो आपको फ्रेंडली नेचर जो आपको लगता है ना कि सामने वाला ऐसे आके बोल के नहीं जा रहा है, वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि 2 मिनट अगर वीडियो को 2 बार भी बैठ करके देख लोगे ना तो समझ जाओगे क्यों बोल रहा है. मे बी वो वीडियो के अंदर नहीं बोला क्यों बोल रहा है, बट आप समझ जाओ. वो मुझे अच्छा लगता है. This is sweet of you, यार. बहुत सही. मैं तो बोलूंगा भाई, I didn't know that you took a sabbatical from YouTube. I think you should come back. Come back, bro. Come back. Hashtag. Revive Chalchitra, like revive Shakti's YouTube. Yes, why not? Please do subscribe to Shakti Bhai's channel. I think link है हमारे comment section में. कमेंट में डाल दिए. बहुत जरूरी. हाँ यार, तैयब भाई आप भी ऐसे बनाते हो क्या वीडियो? मेरा भाई 1 साल पहले एक वीडियो आया था. उसको उस पर रिएक्ट करे.
गाइस कितने लोगों ने तैयब का नहीं, वो वीडियो let's देखा? not do that. अरे बहुत Let's सही not है do भाई, that. तेरे एकदम से मतलब इतने सारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, फील है एक सेकंड, can you hold? हाँ मम्मी मैं आ रहा हूँ, खाना खा लूंगा। म्यूट नहीं हुआ भाई। हाँ मैं म्यूट की तरफ गया भी नहीं था। सही ठीक है, है। हाँ let's continue. खाने में क्या बना है तैयब भाई? I have no idea. It's a surprise. Is this your usual timing, dinner time, और आज लेट हो गया? कहीं तो तो लेट खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है? अपनी तबीयत का ख्याल रखिए। मैं कभी कभी लेट खाना खाता हूँ, मोस्टली लेट ही खाना खाता तैयब डू यू थिंक अभी आपने जिस टोन में अपनी मदर से बात की, क्या वो एरोगेंट था? हूँ। नहीं, that wasn't arrogant, बिल्कुल भी नहीं था। if you find that arrogance, तो उसका explanation है that my mother is 2 stories down, तो थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है, हाँ और माइक आपके बिल्कुल पास में है, इसलिए आपको ऐसा लगा। मुझे ये एरोगेंस पे बात करनी थी, that sometimes the person is not trying to be arrogant, but पर्सपेक्टिव। क्योंकि उसका लहजा ऐसा है, हाँ आई थिंक लहजा वो उर्दू वर्ड है, आप समझेंगे तो वो कंडीशन समझनी पड़ेगी। हो सकता है वो खुद से फ्रस्ट्रेटेड है, कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड लोग भी एरोगेंस की तरफ चले जाते हैं, इवन दो दे आर नॉट ट्राइंग टू बी एरोगेंट, बट वो जिंदगी से इतने परेशान है कि उनके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो हो सकता है थोड़े एरोगेंस वाले, बट अगर आप उनको प्यार से पुचकारोगे, पानी पिला के बात करोगे, तो वो कर सकते No, हैं। actually, that's a very good point. Yeah, like if you want to understand someone, right? So it has to come from a place of empathy. yeah. अगर तुम किसको समझना चाहते हो तो you'll have to have that love. Otherwise, there's no way you're going to understand someone. Most of the reason why we dislike someone or हमें किसके लिए hatred eventually हो जाता है is because we don't come from a place of love or empathy. Yes. The moment you open up and you try to understand them, फिर तो बचता ही नहीं कुछ hate करने। तुम अभी तुम्हारे I'm pretty sure like your brother or your sibling or even your parents, I'm pretty sure उनमें कितनी ऐसी खामियां होगी, but somehow you're okay with them ना, because you come from a place of love for them, right? Yes. So I think that's what he's saying. Yeah, that whole tone वाला thing, it's just a matter of perspective. मार्केट करोड़पति का बड़ा अच्छा कमेंट आया कि तैयब भाई शक्ति भाई का पॉडकास्ट सुनो और जल्दी खाना खा के सो जाओ। You're right. Yeah. Everybody should एक टाइम टेबल बनाओ, अपनी जिंदगी को सही रास्ते पे लेकर के आओ, ये बहुत जरूरी है। Yes. Yeah. बट यार मेरे को बहुत फील है, आज हम सब इतने टाइम के बाद कनेक्ट किए, फक 12 बजने वाले हैं, जस्ट सॉ हमने चालू कितने बजे किया था? वी स्टार्टेड लेट, आई थिंक 10:15। 15 या तो बहुत 10:30 था joined ना at शेड्यूल 10:30. टाइम? 10 शेड्यूल टाइम क्या था? शेड्यूल, अरे यार हम अच्छा, मेरे तो को और मतलब मैं वानी को एक इतना लेट सोलो नहीं था। सेशन भी करना होता है यार। हमें अच्छा। इंट्रो और आउट्रो करना होता है, क्योंकि हमारे वो फ्राइडे स्ट्रीम्स है ना, तो हमने वैसे किया कि हम लोगों को बुलाया करेंगे हमारे स्ट्रीम्स पे, तो जिससे स्टार्ट और एंड हम कर लें, एंड लाइक दिस इज द आइडिया बेसिकली। तो तैयब भाई अब अगला साइंस की क्या स्ट्रीम करने वाले हो? क्या अगली बड़ी डेवलपमेंट है जिसपे आप करने वाले हो? मेजर तो अभी अपन मुझे लग रहा है कि 10-12 और एपिसोड लग जाएंगे जिस स्पीड से हम चल रहे हैं। एक हमारा जो वीडियो लास्ट ईयर का छूटा हुआ है उसको मैं अभी कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 5 मिनट मुश्किल से कवर कर पाता हूँ मैं एवरी स्ट्रीम जो हमारी सैटरडे की हो पाती है, तो अभी तो हम वही कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपके हर बार की तरह काफी लोग आते हैं उसके अंदर और अपने साइंस रिलेटेड एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी को लेकर के सवाल पूछते हैं, आई ट्राई टू कन्विंस देम कि हाँ जिंदगी में बहुत कुछ है जानने के लिए, तो आप इंस्पायर होइए और आप मुझे कुछ बताइए नया, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तो वही है, देयर इज नो स्पेसिफिक टॉपिक एज ऑफ, आई डोंट स्पेसिफिकली आई एम नॉट श्योर कि कल स्ट्रीम होगा कि नहीं होगा, बट आई विल ट्राई। तो आप जरूर कल ज्वाइन करिए, स्ट्रीम के अंदर हम बात करेंगे और मोस्टली कोशिश करिए कि साइंस रिलेटेड ही बात करें आप। मैं ज्यादा पॉलिटिक्स वगैरह में जानता नहीं हूँ और फिलोसफी के अंदर भी आई ट्राई टू गिव सम आंसर्स, बट नहीं हो पाता मेरे से भाई, खुल के बता रहा हूँ मैं तुमको। तो साइंस से आपको कुछ भी बात हो, इनफैक्ट अगर आपको कोई एनसीईआरटी से भी अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है, आई ट्राई टू गिव एन आंसर या आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कहाँ चल रही चीज़। तो हम कल वो कोशिश करेंगे बात करने की। तो हाँ, हमारा यही चल रहा है, तो शनिवार रात साइंस के साथ। बहुत सही था। Is that the tagline? शनिवार रात साइंस के साथ? That's such a good line. आज से बना देते हैं भाई, आप बोल दो अब बना देते हैं, आज बना देते हैं। लेजिट ये लाइन, अरे अब बना देते हैं।
एक ये सब यार भाई, हाँ फाउंडर को फाउंडर सब यहीं बैठे हैं, बड़े बड़े दिग्गज हाँ बैठे हैं। हर्ष भाई यार आप बहुत स्पैम कर रहे हो चैट्स में, मतलब मेरे को डर ये है कि मेरे मॉडरेटर्स हटा देंगे आपको, तो एक बार एक ही कमेंट करो, थोड़ा ज्यादा स्पैम हो रहा है तो प्लीज क्या थोड़ा बोलना इसका। क्या चाह रहे हैं हर्ष भाई, हर्ष अगर भाई हम की मेरे उनका को जवाब बात दे समझ सके? नहीं आ रही, वो बहुत पता क्या नहीं, बोलना क्या चाह रहे हैं? वो नहीं हाँ वही है तैयब भाई का वो जो कॉन्सेप्ट है एक्साइटेड है, ना, काफी एक्साइटेड है। एक्साइटेड है, पानी पिला के बात करो उनके साथ कोई तैयब बात भाई नहीं, आप कल आइए, आप कल जरूर कल आइए, मैं आपसे खुल के हाँ बात हर्ष करूंगा। भाई आप तैयब को लाइक डीएम कीजिए और लाइक तैयब भाई आपको स्ट्रीम पे भी बुला यस लेंगे यस यस बस, है ना। और तैयब को यस, चाहिए होते नो हैं यार प्रॉब्लम। लोग, चाहिए स्ट्रीम वगैरह पे लाइक एक सोलो स्ट्रीम आप दोनों भी करो यार, शक्ति एंड लाइक तैयब, आप आओ ना तैयब के साइन स्ट्रीम पे। आई मीन डूड, आई मीन anytime सैटरडे anytime संडे, आई मीन प्लीज डू। सही है। बहुत सही है, बहुत सही है। तो हाँ अब लाइक हमारा लास्ट सेगमेंट है जो मैं और वानी कंटिन्यू करेंगे, बट जाने से पहले इज देयर एनीथिंग जो आप दोनों ऐड करना चाहते हैं, लाइक कोई भी चीज़ जो यार कि यार इस बारे में बात कर लेते हैं। मैं तो देखो वही अपना घिसा पिटा जो है वाइनल रिकॉर्ड दोबारा से चलाना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है इस टाइम पे। हम्म और इवन दो यू माइट फील लाइक कि ये दोबारा से वही बात कर रहा है बोरिंग सी, बट दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि पीपल्स लाइव्स आर एट स्टेक। हम्म तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग बेटर घर पर ही या जो भी है, बट इवन इफ वन पर्सन इज गेटिंग सिवियरली इल बिकॉज ऑफ यू माइट बी, हम्म तो आप कोशिश करिए कि वो ना हो। yeah मैं बस ये कहना हम्म चाहूंगा। तो आपके मास्क पहनने से आप तो बचते ही हैं, साथ में आप एज अ ट्रांसमिशन स्प्रेडर क्या बोलेंगे उसको, वो भी होने से बचते हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके हाथ धोने से आप ही नहीं बचते हैं, आप जिन लोगों को हाथ लगाएंगे वो भी बचते हैं, बस ये दिमाग में रखिए। तो it's still going on, the virus and the pandemic is still going on, just because दो तीन साल हो गए हैं और हम बोर हो गए हैं और हमको कुछ नए गाने सुनने हैं, वो वहां पे मत जाइए। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए बस अपना और अपने आसपास के लोगों का, बहुत कुछ ठीक हो सकता है दुनिया में, बहुत कोशिश सही, करिए। बहुत सही, बहुत सही। थैंक्स तैयब भाई। शक्ति भाई जाते जाते आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? uh, I'm just happy यार, like मैं तो I just enjoy this company, तो I'll कूल है ना focus हम on लोग, you guys. काफी कूल है ना मतलब, Yeah. है ना मतलब। Recently I saw your Succession वाला पोस्ट, मैं like क्या कर रहा है ये Succession के कास्ट के साथ क्या कर रहा है करके। अरे वो बहुत लोगों को मैं रियल मतलब लगी। मैं सिर्फ या मैं स्टार्टिंग में सोचा चलते तो इतना बड़ा हो गया। होएगा गाइस, होएगा होएगा। तो तो आपको कब समझ आया कि वो बट या वो एक्चुअली रियल नहीं था? मैं कमेंट नीचे पढ़ रहा था, मैं तब समझ में आया मुझे, तो तब तक मुझे लग रहा था ये रियल है ये। दैट इज द तो पावर ऑफ अस ना, कि हाँ ये डाउट, क्योंकि बहुत लोगों को लगा ये रियल है, तो लेकिन नाइस है। मुझे भी लगा रियल लगा, हम्म, तो सही है। So yeah, on that front, I'm just glad to be here. For our listeners, I would say, uh, stay curious. Most importantly, stay curious and keep yes, learning. And wherever possible, right? कुछ भी नया skill मिल जाता है उठा लो. Could be anything. If you want to learn a language, कुछ भी नया skill मिल जाता है. Sign language, any musical instrument, just pick it up. वाओ। ये best time है. ये जो अभी हमारा जो आइसोलेशन वाला टाइम है, ये बेस्ट टाइम है जब तुम सीख सकते हो चीजों को, राइट। तो ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एज, क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं तुम्हें वो स्किल कब काम आएगा तुम्हारे बाद में। तो डू इफ पॉसिबल डू दैट, ठीक ही है। ओह शिट, लाइक स्ट्रीम को क्या हो गया? ओह शिट। मतलब सभी तो सब कुछ तुमने भी कुछ नहीं उखाड़ा, But, हमने भी कुछ नहीं उखाड़ा, कुछ नहीं, खुशी रहो सब जिंदगी में। एग्जैक्टली। सही है, सही है। तो सही है, we are fine only, yeah. And take Tayyab's word seriously about the pandemic bit, yeah. You should never be the one who is responsible for someone else's misery, ना? वो Yeah. वाला is very important. तो वो करो. ग्रेट, That's it, yeah. ग्रेट गाइस, थैंक यू सो मच। मैं और वानी अब लास्ट सेगमेंट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच तैयब, थैंक यू सो मच Yeah, शक्ति yeah. फॉर ज्वाइनिंग, Thanks for एंड having us, yeah. we'll see you guys soon, and stay safe, and we'll see you Yeah. soon. Bye Yeah. bye। Bye, Tayyab. कल जरूर ज्वाइन इन करें, कल जरूर तैयब join भाई in करें, स्ट्रीम मजा करेंगे। आएगा। तैयब भाई शक्ति भाई को भी रीच आउट कीजिएगा, एंड लाइक आप लोग बनाओ कुछ इंशाल्लाह प्लान, जरूर, ठीक है? जरूर कोशिश करेंगे। पक्का कल नहीं तो अगले हफ्ते, नहीं तो उसके अगले हफ्ते हम यहीं हैं, आप भी यहीं हो, ज्वाइन करिए, कुछ करेंगे। बढ़िया नहीं, साइंस डिस्कस करते हैं। या पक्का पक्का।
चलो बाय. चलो बाय खुदा गाइस, हाफिज. बाय. बाय बाय. Right. Hey, Hi. what's up? What's up? What's up? Nothing much. 1 second. Can you? Is Yeah, everything okay? yeah. We are live, Vaani. Yeah, I know we're live. Yeah. What's up? क्या चल रहा है? अब मेरा फ्लो बन गया एक्चुअली. मैं स्टार्टिंग में आया तो मेरी एनर्जी थोड़ी लो थी. बट हाँ, Yeah, my starting my I was very chirpy and now I'm like a little hi. yeah. Okay. एनर्जी ट्रांसफर्स. या वो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट वाली ना, लाइक एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, उनकी करेंसी होती है 5 कॉइन होते हैं उनके पास. वो याद है साइमन सिनेक का ही वो Double कॉन्सेप्ट. हो जाता है. हाँ. सो एवरी टाइम लाइक इन I इंट्रो. like how he या एक बार मैं लोगों को वो बता देता एनालॉजी. बेसिकली इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स में क्या होता है कि सबके पास कॉइन्स होते हैं. तो मतलब इंट्रोवर्ट्स के पास मान लो 5 कॉइन है दिन के, तो जितने इंट्रैक्शंस करेगा तो 5 से 4 हो जाएंगे, 4 से 3 हो जाएंगे, 3 से 2 और फिर 0 हो जाता है बाय द एंड ऑफ द डे. एक्सट्रोवर्ट्स का क्या होता है, अगर उसके पास 0 या 5 कॉइन है, सो एवरी इंट्रैक्शन दैट एक्सट्रोवर्ट गेन्स अ कॉइन. सो मेरे पास तो अभी 500 कॉइन्स. सॉरी. या मेरा एक कॉइन बचा है but yeah I like how like he actually gave me like he's the reason how I discovered कि okay how I need to interact in parties or like social circles so as not to tire myself तो ये out. नाइट तो I मतलब go उसने along. ये बोला कि नाइट सूट पहन के आ जाओ. It's a cute night suit, It's a is it very not? cute. Like guys, like ये और nay for the night suit. ये और nay. Hey, This it is also has matching pajamas, but I'm मेरे not को लगा sure. इस पे planets बने हुए हैं, तो actually This is avocados, very badly drawn avocados. affiliate I link think. bro, affiliate link. I don't think it's available on Amazon, but okay, let's try. Maybe Let's we'll try. say. Yeah. Yeah, I found this new craze for like matching like pajamas. Okay, more on that later. But like Simon Sinek says this thing that, you know, like how he interacts with people is because he's also an introvert leader. He does one-on-one interactions and never in a group. And I realized, oh, I can do that because when I talk one-on-one to people, I'm very good at it. But like if I have to do it like with a bunch of people, I get very confused and tired. So start interacting one on one, I say. Just go with an extrovert who can handle the entire group and you just talk to one person individually and then you cover every person. Did you just pull that off अभी? On What? the अभी सबके साथ like जो अभी तैयार go with an extrovert and No, but now that you say it, yeah, it yeah. makes Nice. People are really doing the yays in the chat. sense. Yeah. I like how people are like, let's normalize night suits on stream. Let's normalize dressing up on streams. Yeah. Dressing up for streams in good, I don't know, in matching stuff. Yeah. But this is great, dude. 12 बज गए. I think this is after a very long time. मैंने It's way past our bedtime. yeah, way past our Way bedtime. past your bedtime. It's a little past my bedtime. What's your bedtime? It's you know so funny. Like when we started working together, I used to wake up early and I used to go to bed by 10:30ish, wake up at 6ish. Yeah. And all of a sudden you go to bed at 10:30ish and you're waking up at 6ish and I go to bed at like 11:30ish and I wake हाँ. up at 7. But I think you have also improved. बीच में आपका बहुत ऊपर नीचे हो गया था. अभी तो फिर भी ठीक है. 11:30 and 7:30 is still not bad, no? बीच में आपका Yeah, काफी it's हिल not गया bad. था. हाँ. Dude, I have an काफी idea. ज्यादा. I have an idea. एक तो अर्पण भाई का कमेंट पढ़ना है मेरे को. अर्पण, guys, subscribe to the annual Godfather membership. I love your Wow. content for over a year now, and you guys are definitely the best guys on the internet. Comments like these keep us going, dude. Like, this is Are you great. clicking a screenshot? Yeah, I was taking a screenshot. Is this better or is this better? Yeah, is this. Yeah, cool. I तो like holding my mic now. yeah, तो मैं But क्या कह yeah, रहा था, I have an idea. Let's watch to end the stream वानी का एक बेड टाइम जर्नल सुनते हैं, क्योंकि इट्स ऑल आर लाइक सबको आज एम्बैरेस कराते हैं. सो आपका एक वीडियो देखेंगे, फिर मेरा भी who देख is सकते हैं. नहीं, बट लाइक टू रैप इट अप, वानी का एक बेड टाइम जर्नल सुनेंगे एंड वील रिएक्ट टू इट. एंड गाइस, बिल्कुल सब ऐसे वाइंड डाउन होने के लिए अपना पानी वानी लेके आ जाओ. yeah. And
And you can click photo, screenshot your favorite reaction. You can post it on Instagram and tag us. या एंड मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ. तो विच एपिसोड डू यू वांट मी टू प्ले? The first one. द फर्स्ट वन? I think so, yeah. मेरा विंडोज़ वाले का मन था. चलो फर्स्ट Okay, कर cool. लेते हैं, फर्स्ट कर लेते हैं. सो But if you want to do Windows, it's okay. नहीं मतलब इट्स योर. सो गाइज, जिनको नहीं पता है, हमारा एक पॉडकास्ट भी है. इट गोज बाय द नेम ऑफ सेकेंड लास्ट सपर. एंड वानी वहाँ पे ऐसे बहुत ही ऐसे ASMR वॉइस में वीडियोस बनाती हैं. तो हम अभी वानी का उसका एपिसोड 1 सुनेंगे. वी आर डूइंग इट बिकॉज आपको बिल्कुल एक ऐसे निद्रा वाली स्टेट में चले जाएंगे आप. ऑल द लव टू चलचित्र टॉक्स. हाउ डू यू प्रोनाउंस द नेम? Srishti. सृष्टि इज सेइंग. I think it's Srishti. या चलो मैं अब आपको स्टार्ट करता हूँ. आप अपना लाइक या 1 सेकेंड गाइस, लेट्स डू दिस. ठीक है? अनि आर यू नर्वस? Yeah. ठीक है. So this is basically Vani, why don't you give us an intro? What is about to happen? So this is a super short story, a write-up about warm yellow lights versus white lights. Cool. And this is in a very ASMR voice of Vani. Let's listen to it. Iski animation is done by Vinayak Tripathi, by the way. Subscribe to this channel also. This is our podcast channel where Vani and I make separate podcasts, very different style of podcasts. And आगे जब इनका comment. Let's watch this. Hi. Welcome to Second Last Supper. You are listening to Bedtime Journals with Vaani. And tonight I want to tell you about a street lamp. When I was growing up, I would spend my summer vacations at my grandparents' place. The month of July, the time of rains in the small town of Mandi. But I had a hard time falling asleep as a child. So, at sharp 8:30 p.m. each night, Nanima would tuck me to bed. But instead of going to sleep, I would patiently wait with a champak hidden under my pillow. And when everything would go quiet, I would tiptoe out of bed, open the curtains, and there it would be. The warm yellow street lamp next to the window, glistening in the rain. Apparently, this was what I needed because in less than a few minutes, I would fall asleep in the company of rain and my warm yellow street lamp. But these days, things are a little different. I no longer have a warm yellow street lamp next to the window. I now have a tacky white street lamp next to the window. And this makes me sad. This tacky white has no character. It has no charm. It has no warmth. And to be honest, this tacky white makes me a little anxious. So now when I have to go to sleep, I draw all the curtains to shut out the tacky white street lamp. I turn off all the lights and I ask Alexa to play the sound of rain. It still puts me to sleep, but it's just not the same. I need my warm yellow street lamp next to the window. Oh shit. बारिश की आवाज जाते हैं पीछे. ए
There's this beautiful comment by Abhay. Okay, as an MBBS student, listening in 2x speed is a must. Shit, दूसरा episode चालू हो गया, रुको. As an MBBS student, listening to on 2x is a must, but listening Vaani's voice on 2x is just unethical. How nice. Yeah. Thank you, Abhay. This was really cool, dude. This is like really, really cool. And I like how Tacky White, when Tacky White came, it was very, I was like, why would I use, why did we use that word? And then that was like, Tacky White brings so much anxiety. And I was like, hey, it's actually serving as anxiety. But yeah. yeah. Nahi, but like, yeah. Joining live for the first time. Okay, so how many people listen to the अभी वानी वाला जो हमने आपको podcast सुनाया? How many of the people like saw or heard that for the first time? Comments में मी के साथ लिखिए. And yeah, ये हर्ष और हरीश आज किसी अलग ही ट्रिप पे चैट पे. I just think my moderators are very kind to you guys, so yeah, we'll let it pass. We want more of these bedtime journals. Jibin is saying. कब आ रहा है नेक्स्ट एपिसोड? अब तो आपने नाइट लाइट वो भी सेम कलर के ले लिया. Soon. It depends on Vinayak. I'll send a recording soon. Yeah. Dude, we can like, do you want to do something interesting right now? I want to do terms and conditions. Right, let's try right now. ठीक है. Can you I have Oxford Dictionary also. in case कोई ऐसे you want to just read terms and out of it. conditions खोलते हैं. The old tank, Harsh, Siddhant, all these people are like listening to it for the first time. Okay, so Apple Okay, terms and conditions generated. हाँ, जनरेटर के टर्म्स एंड कंडीशन. माइक बिल्कुल ऐसे पास रख लो, ठीक है. हम लाइव एक Okay. बेड टाइम जर्नल I बनाने think वाले we'll हैं. just do Apple एप्पल terms and टर्म्स एंड एप्पल आईफोन टर्म्स एंड कंडीशन. Okay. ठीक है. Apple Media Services terms and conditions. Copyright ना है हमें इस पे. नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा. ठीक है. आप थोड़ा लाइटिंग भी चेंज करो. 2 लाइट जल रही है ना आपकी, रिंग लाइट और एक और जो आपके टेबल पे होती है. दोनों में से एक को बंद या डिम कर दो. Is it okay? या Why do I never? I should start sitting like this actually. It's very bright otherwise. तुम फुल रखती हो. Yeah, I am an idiot. या बट एनीवे, ठीक है. लेट्स स्टार्ट एंड स्टार्ट करते हैं. यू फाउंड ना अच्छा खासा ऐसे लंबा टेक्स्ट. I hope it's yep. हाँ Okay. ठीक है. लेट्स स्टार्ट गाइस ऑन अ काउंट ऑफ 3 2 1 एंड एक्शन. Apple Media Services terms and conditions. These terms and conditions create a contract between you and Apple, the agreement. Please read the agreement carefully. To confirm your understanding and acceptance of the agreement, click Agree. A. Introduction to our services. This agreement governs your use of Apple's services, example, and where available: App Store, Apple Arcade, Apple Books, Apple Fitness Plus, Apple Music, Apple News, Apple News Plus, Apple One, Apple Podcasts, Apple Podcast subscriptions, Apple TV, Apple TV Plus, Apple TV channels, Game Center, iTunes, through which you can buy, get, license, rent, or subscribe to content, apps as defined below, and other in-app services, collectively content. Content may be offered through the services by Apple or a third party. Our services are available for your use in your country or territory of residence, home country. By creating an account for use of the services in a particular country or territory, you are specifying it as your home country.
To use our services, you need compatible hardware, software, latest version recommended and sometimes required, and internet access. Fee may apply. Our services' performance may be affected by these factors. B. Using our services, payments, taxes, and refunds. Dude, this is good. ये पक्का इसकी क्लिप बन रही है. इसकी गाइस कैसा लगा चैट्स में बताइए. And Ansar is saying I'm ready to sell my kidney for this Apple Watch. Dude, this is good. Great. This is good. We can do this. This is good. Yeah. Yeah. I think it's time. ये तुम्हारा hashtag revive जैसे सबका revive कराएंगे. Hashtag revive Vaani's podcast. And I'll just randomly just start reading anything and everything. I hope that works. yeah, I think so, dude. Yeah. I think हम अभी too intellectualize कर रहे हैं उसको. कुछ भी पढ़ना चालू कर दो. Bedtime journals. It's journaling. Yeah. Abhay Singh converting to Apple user. कि हाँ इतने प्यार से बता देते तो समझ जाते ना कि अच्छा. This is nice. So this is great यार. 1 second ना. Yeah, people will be using it as a sleeping pill someday. Abir is saying. Yeah, man. I think we should really make more of these. Yeah. We should. I think वानी का जो last coin था वो भी खत्म हो चुका है. So on that note, I think On that note, we'll watch one last video नहीं of नहीं Vaibhav. नहीं वो अच्छा उस पे end हो गया है because it was like I think there are a few things we should revive. Podcasts, VM calling VM. Yeah. That was one of my favorites. yeah. Yeah. हमने कितने शूट किए थे 2 एपिसोड या 3 I think तीन किए थे. One was Bukowski, one was Chetan Bhagat, the third was I remember Saurav was also there. We have done 4 पता नहीं 3 मेरे को लोकेशंस याद है. मैं उसमें मनी बॉल रेफरेंस देता हूँ कुछ कि I was watching Yeah. मनी बॉल क्योंकि I shot it in the room. Yeah. Oh, and I tell you, and I cut the call when you say Moneyball. Yeah. My only regret is we never shot one, not even one episode, just made it was a good frame for my face. Yeah. तैयब भाई is there. इनको गाना सुनाना है शायद. तैयब भाई को ऐड कर लो. Yeah. तैयब भाई एंड करने वाले थे बट तैयब भाई Are you okay? तैयब भाई तैयब तो स्ट्रीम में तैयब Am I in the stream? हाँ तो स्ट्रीम में आ गया. प्लान था उसका प्लान था. बजाओ भाई बजाओ. If you guys are talking about something, so please continue. Yeah, we were talking about how we want to go to sleep. I was just kidding though, please. I wasn't being arrogant. तैयब मैं तो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा हूँ भाई. आओ. नाइस यार हमें करने चाहिए स्ट्रीम्स ना. आई थिंक कल कोटी मीटिंग भी है ना तो 2-4 ऐसे आई थिंक हम थोड़ा कॉन्शियस हो रहे हैं कंटेंट Like we can do it once every, like twice in a month. या We can reward ourselves. the yeah. Maybe twice will be a little too much once. I think ये थोड़ा bright हो रहा है अभी के माहौल के लिए. You just mellow it down. Okay. There is a very good comment by Harish for you, Vaani. You should read it.
you know, Harish and Harsh have been doing essay comments. I'm like, is he mocking me now? Is he like? I think But no, thank no, you no. so much, It's Harish. a I'm going to nice take that as a comment. compliment. It's a nice comment. Yeah. Thank you, Harish. I'll take that as a compliment. He sees my sense of humor. Hey, thanks. तैयब भाई काफी मूड बना रहे हैं. ऐसा होता, यही तो करते थे कॉलेज में, ऐसे बैठे हैं, एक दोस्त गिटार पे बजा रहा है. ये तो काफी You ओवर know ही. what? You know, like this reminds me of Divyam because sometimes my mother will just come in and argue with me and she'll be screaming at me and वो पीछे से background music दे रहा होता है टन. I just feel like, can you just not do that? Yeah, this is nice, dude. मैं ऐसे ही कूदा हूँ भाई बीच में, तुमको जो भी बात करनी है तुम करो आराम से, हाँ. just ignore me. तैयब भाई बट नहीं, नाइस है यार. आई विश मोर पीपल डू दैट. बहुत सही है, बहुत सही है. एंड लाइक गाइस, बहुत ही बढ़िया स्ट्रीम था आज का. एंड या मैन, डू चेक आउट आवर वेबसाइट chalchitratalks.com. अभी मैं आपको, चलो मेरे को एक चीज़ दिखानी थी ना, तो मैं वो दिखाता हूँ. हम बात कर रहे थे कि मैं एक चीज़ क्या दिखा सकता हूँ. तैयब तेरे को पता है चलचित्र की वेबसाइट को रिवाइव किया हमने. Show me, dude. डूड तू खुश हो जाएगा ब्रो. दिखाओ दिखाओ. तेरे को फील आ जाएगी, तेरे को मतलब रोना आ जाएगा. तू Nice. प्राउड होगा अपने दोस्तों ओह, का. मैं मजाक भी नहीं कर रहा अगर हूँ. अगर सही में मजा आया तो एक गाना आपके लिए, हाँ. सभी के लिए. हाँ, तैयब का मैं गेम समझ गया. चलो अब मैं देखो वेबसाइट दिखाता हूँ. तो ये है chalchitratalks.com. ओके, तू अब इस पे कहीं पे भी चले जा. तू किसी, ये सारे गेस्ट जो आज तक आए हैं, तू किसी के पे भी क्लिक कर Okay. एंड यू विल सी ऑल देयर रिकमेंडेशंस एंड देन यू कैन बाय दोज ऑन Amazon. Hey, nice. डायरेक्टली लिंक है. हाँ, डायरेक्टली लिंक है, हमारे क्या अफिलिएट प्यारी लिंक चीज बनाई भाई. है ना. तो ये जैसे Nice. अब तो रत्ना पीटर गोल्ड ने जो भी बुक्स रिकमेंड की थी मेरे को, तो ये Catch-22, स्लॉटर हाउस 5, ब्लीक You हाउस. recommended Bleak मतलब मुझे House. ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कहाँ से मिलेगी. ये लिंक पे जाओ, खरीदो, हाँ कल तुम्हारे घर पे. हाँ. प्यारा, बहुत प्यारा. और उसके बाद वी आर डूइंग द सेम थिंग फॉर मूवीज का. ऐसे आएगा व्यू ऑन IMDb कर देंगे उसमें, एंड ऐसे सबकी जो भी सारी रिकमेंडेशंस हैं. सो शानदार. ये चीज़ है एक जो हमने की है. सो देर इज़ ब्लॉग भी हमारा हम रिवाइव कर रहे हैं. जो आज तक जितने भी, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, माई 9 लर्निंग्स फ्रॉम 2 years ऑफ रनिंग चलचित्र टॉक्स. अब 2 के 2.5 या 3 हो गए. तो अच्छा ये, हाँ. सो ये पढ़ना, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे अच्छी सी एक ऐसे ब्लॉग लिखा था. देर इज़ मेम्बरशिप एंड देर इज़ मर्चेंडाइज खोलोगे तो कड़क मर्च खुलता है where you can buy everything. Nice, nice. There is yearly membership now. A lot of people are taking our yearly membership. Cool. All the membership perks that you get. क्या क्या हमारी guidelines Yes. हैं. And हमने core team की photos भी डाली हैं. Core team में the every person who works day and hard. Nanika has helped me a lot with this website. Vansh जिनकी अभी यहाँ पे photo नहीं है वो भी हैं. And this is Saurabh who is also the co-founder. Saurabh, me and Vaani run Chalchitra Talks. This is Vinayak. आप कभी कभी इनको स्ट्रीम्स में देखते हो, बट लाइक ही इज द वन हु बाय द वे मेड वानी के सेकंड लास्ट सपर के एनिमेशंस. दिस Super. इज And we are working on season 2 now, guys. या दिस इज दिशा के आप लाइक शी रिसेंटली मेड द वीडियो बेस्ट ऑफ 2021. This is Priyansh edits our best videos. He's our chief editor. This is Akash, he's a social media manager. This is Hindol, you know him from quizzing. This is Samraj, graphics, like everything graphics related is done by him. And this is Nanika, and she's helping with a lot of things and including the website work. तो guys जाके देखिए chalchitratalks.com. एंड यहाँ पे नीचे मेरी, वानी और अ बुक अ मंथ की भी हैं रिकमेंडेशंस हैं. तो इन पेजेस पे काम चल रहा है. तो वानी ने आज तक जितनी किताबें रिकमेंड की हैं, तैयब, Some of them are from personal बात है. library है also. ना, क्या बात. शानदार. कूल ना, मस्त बनाया ना. क्या बात. बड़ा बड़ा मतलब काफी फ्रेंडली यूआई है. मतलब हाँ there's not आगे पीछे ऊपर नीचे बहुत कुछ नहीं चल रहा. It's just directly recommendations, and if you want to go and like Yeah. get them, या directly एक बटन है, प्रेस करो, घर पे आ जाएगा आपके. क्या या बात. बहुत बढ़िया. बहुत ही दिल से बनाया है. अब तैयब भाई को पसंद है, अब तैयब भाई गाना सुनाएंगे. हाँ अच्छा सुना ना.
सुनाओ सुनाओ, मेरे को बस वो डर है यार, यूट्यूब वो जूम ना नॉइस बहुत हार्ड कट करता है, तो तेरे गाने की ओवरऑल क्वालिटी खराब ना हो जाए। 2 लाइन कर लेते हैं, अगर आपको समझ में हाँ आता है तो बताइए। हाँ हाँ। अपन तो यहीं बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं? इकलौता दिल मेरा तुझ पे ही कुर्बान हुआ, हकीकत है या कोई है वहमी दास्तां, सोहबत में तेरी गुजारूं शामों सुबह, दिलकश रहे जिंदगी है बस यही एक दुआ, सुन लो ना। लफ्ज़ कम से हो गए हाजिर जो तुम हो यहाँ, दिल राजी आने को तेरे गुलिस्तां, हम तुम जो संग रहे कायम रहे खुशियाँ, धागे में तोड़ दूं और गवाह हो ये दुनिया, सुन लो ना। Hey, this was really nice, dude. Which song is this? This one's called सुन लो ना। किसका है ये, मतलब? आई थिंक ये सुजॉन का है। Got it, got it, got it. बहुत ही बढ़िया गाना था यार, and मस्त यार, like I really liked your surprise entry. वानी, कैसा लगा आपको गाना? मैं थोड़ा सा कंपनसेट Really कर रहा था, आई केम लेट, सो आई शुड कंट्रीब्यूट टू Oh, चलचित्र मोर। nice. I thought like Tayyab गलती से वापस आ गया because he was so confused. हाँ. Song name please, people are asking in the comments. तैयब भाई बता Yeah. दीजिए। इट्स कॉल्ड सुन लो ना। सुन लो ना। तो बढ़िया है यार, on that note we'll end the stream, and thank you so much for joining यार, thank you so much तैयब, and मैं अब stream end करूँगा, we'll see you guys, bye bye, Yay. bye everyone, bye, Bye bye. गुड नाइट। good night. Good night.